All right, I think we are live. Hi. What is up? What is up? क्या चल रहा है? देखते हैं एक बार. Let's wait for a few people to tune in. Then let's start. Meanwhile, I'll just see what's up. यार ये बहुत लाउड है मेरे लिए एटलीस्ट. मैं अपने लिए कम कर लेता हूँ. Yep, this feels good. Table कर लिया हमने रेग. We're playing the Saturday Prime 25 LGDD on Spartan Poker. Let's update that once. कहाँ डालूँ इसे? इधर डालते हैं. Okay. Saturday Prime 25. Well, all right. Make it visible so that you guys can see too. Okay, yes, it is now visible. Is there anyone in the chat? Jennifer Witcher is here in the chat. Late OP. हाँ यार, आज थोड़ा लेट तो हो गया. फिगर आउट कर रहा था मैं. 3-4 दिन भी स्ट्रीम ना करो तो ऐसा लगता है कि कुछ नया करना है वापस से, क्योंकि आदत तो अभी हुई है नहीं. सो यस, लेट आने पे नाचना पड़ेगा अब. नहीं, ये कौन सा बॉन्ड साइन करवा रहे हो यार तुम लोग मुझसे? तू क्या चाहता है अब मैं आऊँ ही नहीं? लेट हो गया तो आना ही बंद कर दो. ऐसे मत कर यार. तो चैट. यस, ऑलराइट. एक बार व्हाट्सएप देख लेते हैं. कुछ सीन तो नहीं है? नहीं, सब सही लग रहा है. ओके. कैसा चल रहा है सबका आईओपीसी, एक बार बताओगे? फिर हम करते हैं थोड़ा इधर उधर. Mohit Narayani is there in the chat. Lots of good wishes to you, bro. Thank you so much. That's so sweet of you. Such a sweet message. यार मुझे 5 मिनट हुए रजिस्टर किए हुए. आई डोंट थिंक क्यूपिड चैट ने कोई भी नॉन अग्रेसिव एक्शन किया है अभी तक. या तो 3 बेट किया है, या आरएफआई किया है, या आईसो किया है. कैसे? और आई डोंट थिंक कोई शोडाउन भी हुआ है अभी तक, तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है. लेट्स सी. Vipin D is here in the chat. Says hi bro. Hi Vipin, कैसे हो? कर रहे हो क्या आप ग्राइंड आईओपीसी? कैसा चल रहा है? Indian Poker Noob is there in the chat. Good luck. Hi Indian Poker Noob, thank you so much. Are you the real Indian Poker Noob? That would be pretty cool for the chat. Vipin says good luck, thank you so much. हमने A3 सूटेड ओवरलिम्प किया था और काफ़ी डिजास्टर्स फ्लॉप आया है. सो वील जस्ट चेक फोल्ड. लेट इट गो. I'm sorry. क्या हो गया? Jack 10 suited, we'll open.
2 मिनट देना, मुझे पता नहीं चैट इज डिसेबल्ड फॉर दिस लाइव स्ट्रीम क्यों दिखाने लगा है अचानक से। नवीन कुमार से बेस्ट ऑफ लक उत्सव, थैंक यू सो मच नवीन, कैसे हो, क्या चल रहा है? Hmm, 2 मिनट देना यार, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दिस लाइव चैट का सीन। आई डोंट नो व्हाई दिस सेज डिसेबल्ड। बिना चैट के तो नहीं हो पाएगा यार ये स्ट्रीम। लेट्स फिगर दिस आउट, somebody help me please। व्हाट्सएप ग्रुप में, अबे यार मैं पूछूं भी किससे, लाइव चैट ही बंद है। दिस इज काइंड ऑफ फक्ड अप। सेवन वर्सेस 5x ओपन यार, देखते हैं फ्लॉप, देखते हैं क्या चल। ओ वी हिट अ सेट। Versus this bet, I think I'll just raise straight away. This this reeks of strength, so let's try to capitalize on that. We'll keep betting, and I'll bet big because we don't want a lot of draws to get there, because if he has like aces, kings, queens, we want to get max value right away, basically a double up. All right, this is okay. Maybe he has like ace queen, ace king, single diamond, so it's fine. Oh, you can't chat now. Okay. All right. That's good. I'll also update my YouTube then. Yes, now I can see. Awesome. So let's see क्या चल रहा है. Rahul Sapati says hi, good luck. Hey Rahul, thank you so much. King Jack off versus Cupid's turn. We'll actually 3-bet. Do we want to?
okay to 3-bet, but it's okay to call also. Let's just call because there's some good people, some good fellas behind us. We want to play the hand against. Versus a big bet. I mean, there's an argument to float यहाँ पे because there's a lot of stuff you can do on future streets, but multi-way में चलो we'll just let it go. बहुत deep है अभी, ज़्यादा कुछ बकचोदी नहीं करते. क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? Which says till yet not much, but only 5.5k loss in IOPC. So much bad beats. Oh, I mean, I completely feel you, man. That's how most of these high guarantee series work, man. Because it's not even like more bad beats than regular, but just that a lot of people just start playing poker as a result of these high guarantees. A lot of people get into poker as a result. एंड उनको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती तो वो वीकर गेट इट इन कर लेते हैं बहुत बार. एंड देन ऑफ कोर्स पोकर इज सच अ गेम कि कभी कभी तो लगवाएंगे ही वो भी पत्ते. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम आई थिंक. वेट, मुझे तो सही दिख रहा है यार, तुम्हें ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है. व्हाट द फक यार, पता नहीं. मे बी गिव इट अ मिनट बिकॉज मेरे OBS पे तो सही है. तो इफ इट्स नॉट फिक्स्ड ऑटोमेटिकली इन अ कपल ऑफ मिनट्स वी विल डू समथिंग अबाउट इट. मैं कमेंट भी कर देता हूँ. Yes. All right. चलो, सारे इनिशियल फकअप्स हो गए आज बिना स्ट्रीम बंद हुए. सो दैट्स अ विन आई गेस, बिकॉज यूजुअली इसके बीच में स्ट्रीम बंद हो जाती है. तो या ब्रेक आया है मेरे पास. आज एक्चुअली कुछ 2-3 नए एड्स भी हैं दिखाने के लिए, बट अभी तो स्ट्रीम स्टार्ट ही नहीं हुई है टेक्निकली. सो पहले स्ट्रीम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं एड्स में भी. एक दो नए लोग दिख रहे हैं मुझे, पहले एड्रेस कर लेता हूँ मैं. Now we can see chat, now you can see screen. तो for now everything is sorted. Hopefully अब कोई lag नहीं आएगा वापस. घनश्याम पाटिल says good luck Utsav, just wanted to let you know that it's a fun learning experience to watch you stream. That's so sweet of you. Until now तो हम थोड़ा सा stream figure out कर रहे हैं. So I now feel a little comfortable streaming. So I think वो poker वाला जो aspect है उसको भी थोड़ा सा आप बढ़ाते हैं. We'll start playing better as well as kind of rocking stuff out thoda thoroughly. So yeah, besides that I'm also planning to do a couple of study streams with you guys. In fact, one of the giveaways for today is related to this. I want suggestions from you guys as to what stuff you would like to see as part of the study streams. So the best advice will get a ticket. We are giving away tickets to Wanderer Day 1L, which is a 40L guaranteed tournament. It's a flight event, so you get ticket to Day 1L of the tournament. So yeah, stick around and we'll get into the giveaways as well.
उसके बाद भरत से इतना ज़्यादा बिग ब्रांड्स, टेल मी अबाउट इट यार, कुछ समझ नहीं आता। अभी तो 1 घंटा तो बस चैट से बात कर रहा हूँ मैं। Abhishek Gautam says good luck sir, thank you so much sir, thanks a lot for tuning in. Nitin Rawat say yo let's go, thank you so much for updating the thumbnail. YT ने भी अपना थोड़ा बहुत मैजिक दिखा दिया आज, but we'll take it, stream चल रही है, that's good enough for us. Bibhushi Brahma, oh wow, that is such a cool name. बीबी बुला सकता हूँ क्या मैं आपको? But yeah, I think now it's fine. Thanks a lot for that. Indian Voga Noob is all set for a long session. Hopefully we'll end up running deep in this one as well as in the other event that we're playing. Karan says I missed that recliner. Oh, don't worry, it's coming back soon. I don't really love the idea of a green screen. आज के लिए मैंने खरीदी है तो एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए डाली है. I'll see कैसी लग रही है. But maybe I'll come. मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ग्रीन स्क्रीन का फंडा ही होता है कि अगर आपको पसंद नहीं है आपका रूम उतना तो आप ग्रीन स्क्रीन डालते हो. बट मुझे मेरा रूम पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है. इट्स जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स जो मुझे उसमें इतनी नहीं अच्छी लग रही. बट अदरवाइज आई रियली लाइक हाउ द रूम इज़ कमिंग आउट. सो वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रीन स्क्रीन हटा दूंगा मैं वापस. बट या अंटिल देन है, बट इट विल कम बैक. मैंने जब इनिशियली लगाया था ग्रीन स्क्रीन तो मैंने रिक्लाइनर को उसके आगे रखा था क्योंकि मुझे भी बहुत वो लगता है. इतना टॉक्ड अबाउट वो चीज़ हो गया था रिक्लाइनर बीच में, तो मुझे भी लग रहा था कि उसको आगे रख लेता हूँ. बट फिर वो मैनेज नहीं हो पाया था और मेरा एस्थेटिक सेंस इतना वीक है कि मुझे समझ नहीं आया कैसे करूँ, तो मैंने बस हटा के आगे रख दिया ग्रीन स्क्रीन. तो या धीरे धीरे करते हैं, कुछ फिगर आउट करूँगा उसके लिए भी. Vishesh Chaudhary says, I wish you will shepherd bro and also be clever. yeah, we'll definitely try to be cleverer around maneuvering deep stages. Let's hope we can manage that. Abhishek says all the best. Background must have. Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. बैकग्राउंड में है हमारे पास 30 CR. कैसे दिखाऊं यार, ये हटना ही पड़ेगा क्या मुझे? छोड़ो, अभी उठ के जाऊंगा तो दिख जाएगा. All right. एक बार टूर्नामेंट्स देखते हैं आज के क्या क्या है IOPC में. मैंने भी नहीं देखे, थोड़ा देखते हैं क्या क्या है. तो वी हैव अ फ्लाइट टू द 2CR लेजेंड्स जिसका फाइनल टेबल वुड बी टुमारो, जिसका फाइनल डे 2 बेसिकली वुड बी टुमारो एट what time at 10:30 PM tomorrow. Do we have a stream tomorrow? No. So maybe we can do a stream where we rail the final table or something from Legends Day 2. We'll see about that. Then we have a 6LGD tournament, 880 rupees buy-in, which started at 7:30 PM. So maybe we could have registered this one as well. How many big blinds are we getting? We're getting 40 big blinds. Maybe we can get into this one as well. Yeah. Let's see. Break के बाद देखते हैं एक बार. फिर of course we have this Saturday Prime, which is a 4400 buy-in 25 LGD tournament. This one we're playing already. So yeah. Then there's a flight starting to the 40L guaranteed Wanderer in another 30 minutes, which is at 9 PM. So that one I think I'll play on stream.
Yep, yep, yep. Then, of course, there's the Saturday Spotlight, which is a 12 LGDD tournament for a buy-in of 2750, starting at 9:30. Oh yeah, yeah, yeah. We have a bunch of options. Let's see if we can manage to reg and stream them as well. And then, of course, the last one is a 8 LGTD tournament at 11. Cool, cool, cool. Sick schedule. Deepak Kumar says, good luck, bro. Hi, Deepak. Thank you so much. Jennifer says, you take a few members from the viewers and call them on stream and play with them on stream on a private table. Could use fake dummy money while doing it. I know you basically want to spend more time with me, Jennifer, but that's not happening anymore. But yeah, this advice I can actually do it someday. Maybe we can do one of those solve for why like stream where we talk out loud whatever action we're taking and whatever thoughts we have. Yeah, it's possible. But for that, I think everyone who's playing has to actually have a video and audio source available. So I don't know if you guys have that option. I don't want it to be limited to only a few people. So I don't know. Let's figure out the logistics of this one. Maybe we can do it. Kignainov we've defended versus a hijack open. This is the same guy who opened 5x when we had 7. So yeah, he has multiple open sizings, which is making me curious as to why and how. Jack 10 pay versus a big bet. King 9 is close. Without a diamond, I think we can just let go. Yeah, I think it's fine. Just let go. Yep. Jennifer says, "Acha, there's more. There's more where this came from. Let's see." And then while they're playing, you sweat with one of the members and then help him take spots and teach him her live. Oh wow! I wish I was as good. I wish I was as good. But yeah, we probably can. So for example, I think we have few people in MPC who can become mentors, and then we can have mentees as well, and then we can probably do a sit and go with the mentees where they have options to like go back to their mentors twice or thrice in between the SNG or something like that. We've seen similar formats before on other platforms, so yeah, it's feasible definitely. Let's put it in the tank for now. We'll look into it. Sounds interesting. King Queen offsuit, we'll open. We are relatively shorter versus the big blind, but he's also playing wider, so I think it's still okay to open 2.5x. 995 is, oh wow, wow. I mean, that is what does he want to do this with? Maybe some 5x's, some gut shots like 6, 7, 6, 8. But a 4x pot jam, I think we can just let it go for now. It feels like we do have the equity to call over here. But what the hell, I don't know. It definitely feels like a call, but we'll let it go for now. Navin Kumar says, how are you feeling now? So I'm much better. I think like
I've already tested negative for COVID now, but I still have a dry cough, which is kind of irritating. But I've heard it's one of the most common after effects of COVID. So I'm at least glad that I'm over COVID now. So yeah. Saswata Biswas is in the chat saying all the best. Hi Saswat, thank you so much. क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो? वैसे तो आज सैटरडे है ना, आई थिंक सैटरडे को रिलेटिवली कम लोग ही खेलते भी हैं और देखने भी आई थिंक रिलेटिवली कम लोग आएंगे, बट आई थिंक दैट्स ओके. The more quality watching we have, the better giveaways we can plan, so I'm happy about it. Now that we already have 20 people in the chat, मैं एक गिव अवे तो ऑलरेडी बता देता हूँ. इट्स नॉट समथिंग luck based or anything. It's strictly based on how much of the stream you guys follow. So I'm reserving one ticket for the person who's the most active in the chat. So इसमें 2-3 पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे मैं टिकट गिव अवे करूँगा. एक तो मैं इसके बारे में कहीं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ. So the people who've tuned in from the start and are actually actively watching only will like have a share of it. So the funda is simple. 2-3 metrics हैं कि एक तो simply the number of messages that you send in the chat. Ace Jack offsuit, I don't think we can call, so we'll just 3-bet this one. I mean, I don't really want to 3-bet a lot versus Cupid because he's one of the only regs on the table. So I don't really want to intermingle a lot versus him. But with something like Ace Jack offsuit, I don't even want to fold because I think he's VPIPing wide enough that we want to play Ace Jack offsuit and it doesn't really work well as a call. So we'll 3-bet it. But as played, now that we've been cold 4-bet to like such a big size, we'll just let go and hope Kunal will stack off and show us what Strangler 4-bet with. He does call now, having 15 big blinds in a 60 BB pot. Yes, I think we'll see the showdown. Okay, so Ace Queen he Strangler 4-bet us with. Slightly wider than what I would have expected, but it's alright. We'll make a note. I mean, it's wider because Ace Jack off there is like the absolute bottom of my 3-betting range. So yeah. Alright. Again, he's called, and I'm sure he's slightly tilted as well after that last hand. So we'll be cautious about that. King 8-9, 2 diamonds. We have the Queen of Diamonds, but I think we'll just start with a check. Yep. He is definitely tilted. And he just rips 60 bigs into 9 and gets called as well. Wow. Alright. Let's see some showdowns, I guess. He called 9-8 suited and then just ripped 5x pot. Alright. As long as we don't lose a lot of stack because of it, we'll take it. Jack or off suit, we'll just fold. Let's see क्या हो रहा है chat में. Oof. I see Chandramouli Singh in the chat. भाई साहब कहाँ से ये कहाँ आ गए आप? क्या चल रहा है? किस गली आ गए, किस गली? Anonymous Poker says good luck bro, गूदा दिखाने का टाइम आ गया. I remember आपने last time क्या लिखा था. So yep. Let's see.
लेट्स सी चांस मिलेगा क्या इस बार हमें. यहाँ क्या हुआ, किंग क्वीन ऑफ सूट कैसे स्टैक ऑफ हो गया. द सुप्रीम वन ओपन +1 कॉल्ड. Oh wow, Cupid 3-bit called off with King Queen offsuit. I don't think that can ever be a profitable 3-bit call off, but I don't know, man. I don't know. Maybe it is, maybe it is not. All right, all right. Indian Bogus Noob says stealing on ace. That's what he might be jamming on. Good fold, maybe, not sure. I mean, he is kind of fish. We already seen, like in the previous hand versus Strangler, he cold called Jack 9 offsuit in middle position versus our cold 3-bet, and then called a 4-bet and then just ripped on. I don't remember what the board was, but pretty sure not useful, not favorable for Jack 9 suited. Yeah, on deuce 4-7 he ended up jamming. So yeah, he's pretty much just not thinking a lot, I guess. So we also don't need to think a lot versus him. We'll just call him off when we have it, and any piece of the board would work for us. So yeah, let's see. Deadman Callaway says good luck bro. Hi Deadman Callaway, thank you so much. क्या चल रहा है? अभिषेक पाल बोल रहा आज गिव अवे लेके जाना. किसको बोल रहे हो यार ये? डेडमैन को? Devrat in Kaurav in the chat says hey, good luck bro. Hi bro, thank you so much. साहिल कम्बीर says best of luck. Hi साहिल, क्या चल रहा है, कैसे हो? रत्नदीप देव says good luck भाई, thank you so much भाई, क्या चल रहा है? अभी भी स्टार्टिंग स्टैक ही है, so it's fine. देखते हैं. Abhishek Pal says 3-bet ace jack suited. I'm assuming you're saying in the spot where Cupid Stunt opened EP and +1 से हमने ace jack offsuit 3-bet किया था. So ideally in that spot I don't want to 3-bet a lot. So it's not really about the hand. इतना deep stack पे honestly it's not really about the exact hand वहाँ पे. Spot के बारे में अगर हम बात करें, so Cupid Stunt is one of the only smart players on the table, right? I mean, if we talk in terms of relativity, so Cupid Stunt is the smartest player on the table as compared to the others. So versus him, we don't really want to isolate him and play a lot of pots. So more often than not, I want to not 3-bet when he opens, and instead I want to call so that I let the other not relatively as good players to come into the pot. So with a hand like ace jack suited there, I would have flatted. But ace jack offsuit doesn't really do very well multi-way, right? So for that reason I chose to 3-bet ace jack offsuit. But yeah, we still failed because people behind us, like 2 people behind us anyway, got in the pot. So yeah. But ideally in that spot I don't want to 3-bet a lot. So yeah. Tens, alright, 10 we'll open. Did Cupid bust or did he shift tables? Oh, he shifted tables, I'm assuming. Yes, because he already had a 100 BB stack. Chemical 1608, he already has an IOPC tag. Is it from this year? Is it possible for us to know which IOPC edition he got this tag in? I know Supreme One got it in one of the earlier editions, but not sure about Chemical 1608. Aman says good luck bro. Hi Aman, thank you so much. चंद्रमौली सिंह भाई साहब इतना प्रोफेशनल सा रिप्लाई कर दिया यार मौली, क्या बात है, क्या बात है. दिस इज सो ग्रेट बाय द वे. ये नहीं सोचा था मैंने यार. मुझे तो अभी कुछ और एक्सपेक्टेड था यहाँ पे,
बट सही है, सही है. फ्लेम बॉय बोल रहा है रशियन. नो कमेंट्स एज यूजुअल. इग्नोर कर दूंगा मैं कन्वीनियंटली. बीरू सैम ने 3.15 ओपन किया इस बार. आई मीन हर RFI साइज डिफरेंट है बीरू सैम का, सो आई डोंट नो if there is some meaning to it, but we'll call. And this is a good flop for us. Do we want to start donking straight away? I mean, I think our hand is pretty interested in just straight away starting to bet, so we will do that. Top pair, still a good shot. We'll continue. We'll continue. Oh wow. This is not what we thought we'd hit, but we'll take it. We'll bet again, of course, for value. Oh wow. Wow, this sucks. This sucks. I don't think he ever bluffs so here. So I don't think we get to call this. But this definitely sucks, hitting double pair by the river and still having to fold. But yeah, I don't think he ever bluffs, so it's fine, it's fine. I'll mark the hand anyway. Tag last hand for review, yes. Yes sir, yes, I want a review. Abhishek Pal says, what's your poker story? Oh wow, okay. It's a long story actually, so but yeah, if you want it, I'll tell you about it. So करते हैं इसकी बात. We'll fold this. Um, 30 big blinds, I think I'll take. Yeah, I'll take it actually. UDO mode, table 2, I'll put this one. This should be fine. Yes, should be. Oh, nope, not this. थोड़ा सा fuck up हो गया, because this is not. Please ignore my OBS skills for now. In fact, forever, I guess, because I don't see them changing anytime soon. This is still the Saturday Prime. हम टूर्नामेंट के बीच में उसका बायन और PTD चेंज नहीं कर सकते. Wish we could, but नहीं कर सकते. So sadly, this is still the Saturday Prime. And yes, this one is. चंद्रमौली सिंह ने अब सही लग रहा है मुझे, अब सही लग रहा है. Now it feels more like home. किसी दिन स्ट्रीम पे प्ले करूंगा मैं ये वाला मीम, आई थिंक, बिकॉज आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन इट नाउ. अ लिटिल अहेड ऑफ इट्स एज था आई थिंक वो मीम. इस टाइम पे होता तो आई थिंक इट कुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीम्स. हम रहते का है वाला, बट अ लिटिल अहेड ऑफ इट्स टाइम. क्या डाल रहा था मैं? टेक्स्ट. टू
name, which is a 6LGDD 880pi. Alright. Properties. Font. Maybe 40 should be good. I'm not sure. Not good enough actually. So 60. Alright, this should be good. Okay. Yep. अब सही लग रहा है. King 10 suited, of course, we'll VPIP. Meanwhile, we'll also rig the 880 by and 6L GTD IOPS number 60. So, yes, coming back. Abhishek, poker story की मैं करूँगा. I'll get back to it. Hopefully, you'll stick around until then. A8 suited versus EPRFI. There's actually an argument to call or 3-bet this, but we'll call. We don't have time bank, so we have to be cautious about that. Yes. This is surely going multi-way. So let's try to flop spades, I guess. That's the easiest to play for sure. So yeah, we'll take spades. Ace is tricky. We'll see. Funnily, if Magic makes a big bet, we actually have to just fold straight away because it's a 5-way pot, and it happened. So yeah, we'll fold. He gets called, so maybe we'll get to see a showdown, which is good for us. Always good for us. Chemical just ripped. Oh wow. I'm not sure what that was about, but maybe Jack X of diamonds. I mean, I don't think there is a value hand that wants to play like this, but semi bluffs for sure. So maybe something like Queen 10 of diamonds or Jack 10, Jack 8 of diamonds or something like that is actually happily jamming there. आगे देखते हैं क्या चल रहा है. फ्लेम बॉय इज एट इट एज यूजुअल. नाचना पड़ेगा. नहीं नाच रहा मैं. The final table thing, I think, just holds. So whenever I'm final tabling a feature on stream, I'll do it. Won't shy away. Jack 10 suited versus a big 3-bet is close. We already know Strangler actually likes to stack off wide. So yeah. But yeah, even against a wider than usual range, Jack 10 suited still is close versus a 4x 3-bet, so we'll just let go. You just have to play snug for the initial part of the game because everyone else is kind of trying to play wider and build stacks. So yeah, that's what we'll do. Oh, we've got something on the other table. We'll overlimp, I think. Try to flop a set because that's what deuces do best. Flop a disguise set. On the first table, Peppermint Limbs, we'll just check back, try to flop well. Doesn't look like that. Deuces, we'll just check.
checking to primarily just fold on queen 9-7. Not really a very enticing board. This one will just fold. This we'll check again. You can actually bet as well, but I don't think we get as many folds. So our best option is to actually get to a cheap showdown and maybe take it down. Yep. This we can actually call as well. I mean, cheap showdown is what we want, and this looks like cheap enough. Check again. Yep. Cheap showdown is what we wanted. Coming back. क्या चल रहा है? Indian Poker Noobs is flagging. Will surely pay off your bills today. I mean, yeah, actually good advice. I know a good advice when I see it, so I'll take it. And if I don't take it, it's of course dumb of me. So I'll take it. See Jack 9 suited versus +1 3B. He practically just stacked off pre-flop, right? So we'll say that. This guy jammed his 60 bigs on king 8-9, but I think he was already tilted, so we'll take it. We won't really mark him a fish for that. Tilt is something that everyone faces, right? So yeah, if somebody's tilting, we can't really say they are a fish straight away. If they keep tilting on the tables, then sure, we can mark them as tilters. But yeah. क्या चल रहा है? जेनिफर बोल रहा है, अच्छा ये उस वाले टिकट के लिए बोल रहा है, I'm assuming. So yeah, maybe let's see. I have a couple of parameters in my mind for that one, so we'll see. Maybe you'll get it, maybe you won't. चांदनी चकमा से गुड लक. हे चांदनी, थैंक यू सो मच. क्या चल रहा है, कैसे हो? अमन बोल रहा है अंकित सर भी आ गए टेबल पे, 2 लेजेंड. अंकित, ओ अच्छा, यू मीन अंकित वाधवान, राइट? ओके, माय बैड. या he is definitely one of the best players out there, so yeah. Oh, we also have Lord Hendricks on the table. He's always a fun player to have on the table. He keeps doing stuff, which is always fun. अच्छा, मैंने टेबल नहीं दिखा रहा था ना, ये वाली. Yep. Lord Hendricks is the guy I'm talking about. Always fun to have. Agram Gandhi says JMD. What is up, JMD? Okay. Naveen says during the initial part of tourney, I have seen many players playing more loose aggressive, like that Jack 9 hand versus Ace Queen hand. How to handle those situations? I mean, do we need to be more play nuts? I mean, yeah, so I think the best way to actually exploit these guys is to mark them, as we've already done it, and then pre-flop we'll try to play snug, not try to steal a lot or anything. We'll try to just play ABC poker, get it in, basically
tight only, but post flop, threshold for getting it in versus these guys would go much wider actually. But we don't want to do that with bluffs or with drawing hands. So for example, I don't want to stack off with lower end of an open ender on any flops, but let's say even if I have ace jack on queen jack deuce, I'll happily stack off versus this guy. So yeah, my value range post flop would go much wider versus people like these, but pre-flop I'd actually try to play snug and not take a lot of steal spots. So yeah, I hope that answers the question. 3 deuce 3, we'll see bet. We don't even need to go too big. I don't think he has a lot of 3x's in his range. So even a small bet should do the job. He will have a bunch of floats, but I think that's fine. 10-8 offsuit, we'll defend with a 20 BB stack, try to flop something good. I mean, it doesn't really get better, so we'll probably check raise small and try to get it in. 5x, we'll just check back. Not a bad river, to be very honest. We can be good on showdown a lot. Yep, we'll get to showdown and we chop, which is fine. 10-8 offsuit ke against. I think I just want to check raise this one. Damn, that sucks. That sucks. That sucks. Ouch, 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 ouch. ओ वाह वाह वाह, हमारे पास बहुत सारे फन लोग आ गए हैं चैट में. कहाँ से आया ये सब लोग मुझे नहीं पता, बट काफ़ी फन लोग आ गए हैं चैट में. राहुल गर्ग भाई 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 कैसे हो भाई साहब, कैसा चल रहा है आपका स्टार्टअप? Into suited, we'll fold. Queen 9 suited, we actually will try to VPIP versus Lord Hendricks, try to flop something good and not time out this time. We have a 0 time back on this table, so we have to make sure we don't miss a spot here. So yes. King is actually a bad card for our particular hand, but I mean our range is still happy on this board. We do have a lot of suited hands, we do have flushes as well, so we'll bet it. Abhishek Pal says if initially people are jamming in calling point, shouldn't we try to take advantage by loosening? 100%, yeah. So we want to loosen with our value range, right? So we want to have a wider value range versus them. We don't want to bluff a lot, we don't want to steal versus them. So yeah, that's what we are planning to do. Amrit says we want a full house. I want a full house desperately at this point. I'll even take a top pair at this point. But yeah. So let's see. I'll introduce you guys to a few of my friends who are live right now. These are my friends from college. So I have Chandramouli Singh, who's been active, and I'm pretty sure he's the one who got everyone else in as well. And by the way, there is a 3-minute lag, so I get to see your chat. I mean, I get to see your chat instantly, but you get to see my response 3 minutes later. But meanwhile, एक चीज़ मैं कर देता हूँ chat में. This is one for the homies. Should I say homies? I don't know. Faggy sound कर रहा होगा इन्हें, but कुछ करना पड़ता है. चंद्रमौली ने बोला तनेजा का सिस्टम स्लो है, थोड़ी देर में पड़ेगा. सही बात है. 3 मिनट स्लो है मेरा सिस्टम.
Mm-hmm. कपीश ने क्या बोला था बीच में, मैंने मिस कर दिया. कैन यू प्ले सम लाइटनिंग रूले ऑन स्ट्रीम ब्रो? कपीश, मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा पता भी नहीं है कौन सी गेम के बारे में बात कर रहे हो आप, बट पता भी होता तो आई हाईली डाउट मैं खेलता ऑन स्ट्रीम. बट यस यस यस, एक ही गेम आता है वही खेलने की कोशिश करते हैं फॉर नाउ. उसमें भी हमारा टाइम बैंक 0 है, तो थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होके खेलना पड़ेगा हमें. कनक शर्मा सेज आई एम अ फिश, गुड लक. हाय कनक, कैसी है? थैंक यू सो मच. यार मुझे एक बात बताओ, जो हमारा फेवरेट मीम है ये हम रहते कहाँ है वाला, कॉपीराइट आएगा क्या इस पे? एक बार इससे पहले कि फिर से फोल्ड हो जाए कॉल कर लेते हैं. किंग 10 सूटेड इज टू गुड टू फोल्ड. It's close I guess, but yeah, we'll let it go. Oh wow, we have a new table by the way. काफ़ी लोग आ गए हैं हमारी टेबल पे. नितिन भी आ गया है हमारी टेबल पे, सनत है हमारी टेबल पे, वैभव इज ऑल्सो ऑन द टेबल. सही है सही है सही है, काफ़ी अच्छी टेबल हो गई है. राहुल बोल रहा मौली ने पेटेंट फाइल कर दिया है. अच्छा, तो फिर तो बजा ही सकता हूँ मैं, फिर लग रहा है मुझे. Ace 5 offsuit, we'll just fold. Can jam sometimes, but a little too wide I guess. We'll just fold. सिद्धार्थ गंभीर से गुड लक. हाय सिद्धांत, थैंक यू सो मच. क्या चल रहा है, कर रहे हो ग्राइंड आज? नितिन बोल रहे टॉप टू फोल्ड दिल से बुरा लगता है. टेल मी अबाउट इट भाई. 20 बिग ब्लाइंड थे मेरे पास, इससे इजी स्टैक ऑफ नहीं था कोई, बट नॉट टू बी. आई थिंक ये हम रहते का है का पूरा ऑडियो NSFW नहीं है थोड़ा. नेक्स्ट टाइम तक मैं थोड़े क्लिप्स निकाल के रखूँगा उसके, फिर प्रॉबेबली वो दिखा सकता हूँ मैं स्ट्रीम पे, सुना सकता हूँ एक्चुअली. We have 20 bigs on both the tables. यहाँ पे तो अभी starting stack is still 60 bigs, so we'll probably try to
get it in and spin our stack back to 60 or something. Let's see. आया था हमारे पास एक 10-8 बट हो नहीं पाया. Ace jack suited versus a jam. I mean, I'm not happily doing it, but I think I have to just rejam versus this. It's anyway less than even the starting stack, so we don't have much option there. I hope Leo Sam folds, because if he rejams, then it becomes a fold only. But if he folds, I think I'm just going with it. Let's hope to build some stack. Yep, alright, good luck. I hope Ameya hasn't limped a monster. Oof, not a good board for us. Oof. That's alright. That's what we get for entering a tournament so late. So we'll take it. शुभम बोल रहे चले भाई आजकल लौटने अफसर बन गए हैं, देख लेंगे आएगा तो. चलो अब नहीं है कॉपीराइट अगर तो मैं कर ही दूं क्या एक बार ऑडियो प्ले. 1 सेकेंड रुको, फिर मैं ऑडियो प्ले करता हूँ. एस किंग भी आ गया हमारे पास. इधर स्टैक ऑफ होता है और अपना लेजेंड ऑडियो चला देते हैं एक बार. वन फॉर बी टॉप करके चला देता हूँ. 3 deuce 8 all hearts. This doesn't look good at all, but we'll see bit small anyway. Our range is very tight, so maybe we'll get some respect or maybe not. डेस्कटॉप ऑडियो म्यूट करके एक बार मैं सुन लेता हूँ. मैं सही चलाने वाला हूँ ना. चलो मिल गया मुझे. अब एक बार ये स्ट्रीम पे हो जाए. 15 भी ओपन करते हैं. ओपन. अमृत रिजवानी का सुपर चैट आया है भाई साहब. क्या बात है. स्ट्रीम सपोर्ट. इसी बात पे हम रहते काहे बजाते हैं. म्यूट करता हूँ पहले इसको और ऑलराइट. मैं मेरे को खुद को म्यूट कर रहा हूँ फॉर अ बिट. आई एम कॉलिंग ऑफ सिक्सेस एक्चुअली ओवर हियर बिफोर आई गेट इनटू इट. वील रीबाय. वाओ, वी आर एक्चुअली far ahead and we win it even after he clips a 4. Let's fucking go. हेलो, नमस्कार सर, राजू जी से बात हो रही है. हाँ बताओ. सर मैं बोल रहा था म्यूजिक की मालगाड़ी से. हाँ जी बताइए. सर ये म्यूजिक की मालगाड़ी जो है एक कॉन्टेस्ट है जिसमें हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फोन जो है वो रिचार्ज करते हैं. एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है सर. हाँ बताओ. सर बिजी हैं क्या अभी? नहीं खाली है बिल्कुल एकदम. वैसे म्यूजिक का शौक रखते हैं, सुनते तो होंगे ही म्यूजिक सर. हाँ बिल्कुल सुनते हैं. म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन है. जलवा और जो जितने आते हैं चैनल तो वही देखते हैं. अच्छा, तो सर वैसे किसको सुनते हैं ज्यादातर? कौन से सिंगर वगैरह हैं जिन्हें आप सुनते हैं? मेरे को किशोर कुमार ज्यादा पसंद है. चलिए सर, मतलब ये कॉन्टेस्ट तो फिर आप ही के लिए बना हुआ है इसका मतलब सर. तो सर सीन ये है कि हम इसमें आपको 3 गाने सुनाएंगे. छोटे छोटे बहुत ही फेमस गाने होंगे, बहुत ही सुपर डुपर हिट गाने. उसके बाद वो गाना आपको पहचानना है. वो गाना जैसे ही आप सही पहचानते हैं हम यहाँ से आपका फोन जो है 121 रुपए के कूपन से रिचार्ज कर देंगे. तब फिर ठीक है. अच्छा गाना. ठीक है, तो पहला गाना सुनाएंगे. आपके पास 3 मौके हैं सर. 3 गाना हम आपको सुनाएंगे. ठीक है. ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक. और आपका ये पहला गाना आपकी तरफ आ रहा है ये. हाँ.
يعني هاي إلك وين ما تكوني مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة. ये तालिबानी गाना है और ये क्या बोलते हैं, ये गाना है सुपर डुपर हिट गाना है सर, बिलाल खरजीला ने गाया है और ये गाना है थे थे थई थई। थे थे सर थे थे। चलिए खैर कोई बात नहीं, 2 मौके अभी आपके पास और हैं। ये आ रहा है सर आपके लिए। दूसरा बताइए दूसरा। जी सर, ये आपका दूसरा गाना 121 रुपए के रिचार्ज के लिए ये रहा आपके सामने। तुम हमको सुना रहे हो गाना, हम भी वकील है यार। तो वकील भी गाने सुनते ही हैं, जाहिर सी बात है, उनको भी म्यूजिक का शौक होता है। अरे मतलब खेल लो, तुम तीसरा गाना सुनाओ यार। सर तीसरा सुन लीजिए। हमें क्या सर, तीसरा गाना आपके हाँ लिए तीसरा सुनाओ। 121 रुपए के रिचार्ज के लिए ये रहा। نروح رسامي شاد هكي نفوس نفوس والاشواط مقنن। ये गाना ही नहीं है यार, तुम हमसे खेल रहे हो। सर हम आपको नाम बता दे रहे हैं सर, ये जो दूसरा गाना था ये था नैनी अजमाइल उल का तेन है, सुपर हिट गाना था। और सर ये जो तीसरा गाना सुनाया है ये है वारदे एन उलू अहवा। ये 3 गाने हम आपने सुनाया। और सर अब इतना यार कानपुर में इतना हाई फाई लेवल में गाना सुनोगे तो कौन जानता होगा सर यार। यही तो कॉन्टेस्ट है। चलिए सर खैर कोई बात नहीं, खेल के आपसे बहुत अच्छा लगा। 900 रुपए सर हम आपके जो बैलेंस है वो हम काट लेंगे। मेरे मोबाइल से 900 रुपए काट लोगे? कैश पेमेंट करेंगे हम लड़का भेजने लेने के लिए। नहीं हम रहते कहाँ, हम ना कैश पेमेंट दे पाएंगे ना बैलेंस रखते मोबाइल में। तो कोई बात नहीं, जब आप रिचार्ज करवाएंगे, जैसे आप रिचार्ज कराएंगे वैसे ही हम काट लेंगे। तुम्हारी माँ का चूत ग्रोसरी वाले, तुम यहाँ पर आओ तो एक बार पैसा लेने भेजो तो लमडे को, हम बिना थूक के। आई थिंक इतना काफ़ी था। इसके आगे किसी को अगर इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर तो YouTube पे जाके खुद से देख सकता है। इसके आगे ये ज़्यादा ही NSFW होने वाला है। तो हाँ, I think this was good enough for the fields. Yep. या मे बी हम थोड़ा लेटर इन द नाइट इस पे वापस आ सकते हैं, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस वाज अ गुड इनफ ट्रेलर। Coming back. Actually, you know what? I think it's a good segue for a giveaway also. तो अभी जो ऑडियो चल रहा था, what I want you guys to do is, I need you to figure out कि ये जो 3 गाने थे उनमें से कोई भी एक गाना मुझे चाहिए. If you can name even one of these 3 songs, I'll give away a ticket for it. And the first person to tell me any of the 3 songs gets a ticket to Wanderer Day 1L. So please get to it. ये क्या हुआ यार? Let's see, लियो सामने कैसे दिया था पहले अपना स्टैक? He opened, I took against chord and then okay. It's actually close, but we'll take it. We will take it. Ooh, no club. Let's fucking go. Let's go. Cool. So, is 10 off soon. We'll open. Damn it, I missed the limp, man. This sucks. I hope we don't get jammed on. Even getting 3-bet here would suck, but let's see. This we'll definitely 3-bet. Yeah, it makes sense that he jams because he also knows that we kind of opened not noticing the initial limp.
but we should have to fold. Sucks, but have to. Bhai Sahab, super chats pouring in. This one is for the audio, I'm pretty sure. And yeah, so that is why the first giveaway is regarding that as well. I'll quickly post it as well. Boom, boom, boom. I think यही ऑडियो था जो जिसकी वेट कर रहा था पूरा स्ट्रीम. We've started hitting hands as a result as well. So we'll take it. We'll take it. I think we know where to go the next time we're not running good. Let's bet again. Purely for value. Setting up a easy jam on the river. Okay, we'll jam. Hopefully get called by a 3. Alright, so the first giveaway is live. Name one of the 3 songs from the audio I just played. And get a ticket. Alright. Font size कितना रखे? 40 should be good enough क्या? Or was it already 40? I don't know. Oof, definitely not good enough. Make it 100 maybe. Or let's see 80. Yeah, this looks good. Alright, so the first giveaway is live. I just played an audio. Whoever was on the stream would already know. And yeah, name any one of the songs and win yourselves a ticket. Thai. Oh wow. बीच में एक सुपर चैट मैंने मिस कर दिया. विनय चौधरी सेज गुरु दक्षिणा. अरे क्या बात है. ऑल्दो मुझे अब इतना पसंद नहीं आ रहा. ये ऑडियो के बाद गुरु दक्षिणा लेके तो नहीं अच्छा लग रहा मुझे, बट आई विल टेक इट. राहुल गर्ग सेज 69 फॉर द कानपुर बॉयज. ऑल राइट. दिस वन आई विल डेफिनेटली टेक. Aces we stack off, of course. I think, yeah, not losing at this point for sure with all the run good that we have right now. Mohit says epic this one, heard many times. Oh, all right, okay. सही. I thought ये वाला नहीं सुना होगा, but है शौकीन लोग हैं हमारे चैट में. प्रकाश पंडित से कितने तेजस्वी है लोग. सो मोहित, मुझे या तो लिंक चाहिए या फिर पूरा टाइटल अलॉन्ग विद द सिंगर चाहिए इस गाने का, किसी भी एक का. शुभम सिंह ने नैनी अजमल आई थिंक ये सही है, एकदम सही है. आई थिंक ये वाला. लेट मी गेट इट चेक्ड. I'll take a short break. Meanwhile, you can see a couple of the ads that actually last time मैंने आपको एक ad दिखाई थी, I think युवराज की, और आज 2-3 और ads हैं. तो yeah, have a look. I'll just be back in a couple of minutes. एक पल का जीतना फिर तो है
आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस 2-4 घंटे टाइम पास हो जाएंगे। रिपाई लेके प्राइस पूल को है बढ़ाना, मेरा बैंक रोल उड़ाए जा, तू लेके जा, तू लेके जा, मेरा बैंक रोल उड़ाए जा, तू लेके जा, तू लेके जा। ट्रॉफी उसके हाथ में होने ही चाहिए, डायमंड के साथ क्राउन में सोने भी चाहिए, मीडिया में उसकी आईडी वायरल की जाए, मीडिया में उसकी आईडी वायरल की जाए। ओ IOPC बोल दे तेरे मैनेजमेंट को, ओ IOPC बोल दे तेरे मैनेजमेंट को, मेरा यार खेल रहा है गारंटी बढ़ाई जाए, यार खेल रहा है गारंटी बढ़ाई जाए। करोड़ की गारंटी है IOPC के लिए, 20 जन से स्टार्ट किया तो लीडर बोर्ड टॉप करे, क्रूशल पॉइंट पे आ गया तो टफ कॉल किया है गंदा, शोडाउन का टाइम हुआ तो क्या दिखाएगा ये बंदा, नट्स बोलेगा या ब्लफ बोलेगा सारा, बोलेगा या जीजी बोलेगा सारा। एक पल का जीतना फिर तो है हारना, स्टैक क्या ही बनना ये अल्टीमेटली बांटना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस 2-4 घंटे टाइम पास हो जाएंगे। रिपाई लेके प्राइस पूल को है बढ़ाना, मेरा बैंक रोल उड़ाए जा, तू लेके जा, तू लेके जा, मेरा बैंक रोल उड़ाए जा, तू। Alright, welcome back. What is up? तो जो वो वाला गिव अवे था उसमें ऑलरेडी 2-3 एंट्रीज आ गई है एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गिव अवे वन ऑफ द टिकट्स। मोहित, आपने गाने का नाम ज़रूर बताया था एक, आई थिंक, बट आई थिंक वो भी कंप्लीट नहीं था, प्लस सॉन्ग का नेम प्लस सिंगर का नेम उसमें नहीं था। सो शुभम सिंह वॉज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली टेल मी वन ऑफ द सॉन्ग विच वॉज नैनी अजमाई का उल का तन आहा, जो कि if you actually go on to search for it, you'll find it as well. So yeah, Shubham Singh was actually one of the giveaway winners, but I'm not sure if he's actually into playing. So let's see if Shubham replies. If he wants the ticket, it's actually his, but if not, then we actually have to move on to the second person who actually correctly guessed the name of the song and also the singer, which was Abhishek Gautam. So let's see. King 9 of Suit will actually defend. We are inching closer to the starting stack again. So yeah, 4, 5, 6, 2 hearts. This is actually a good board for us to donk, so I think I'll do that. But we won't really 3-barrel because we don't have a heart unless we turn a pair.
this is, I mean, I would have hated to continue, but this is such a good turn for our range that I'll have to continue. And 3 barrel as well if it gets called. So if the river is a non-hard brick, I'd actually have to jam. I'm sorry. Wow, versus the 25 we open jam, we just fold, of course. On the table below, we now have a 60 VV stack. I'm not sure how. I don't even remember the hand. Oh, we won aces versus ace queen right before the break. Nice, nice, nice. So we do have some stacks going in now, which is good. Prakash Pandit says background volume, music volume थोड़ा कम कर लो. Oh, I'm sorry. आप ऐड की बात कर रहे थे, I'm assuming. So next time मैं ब्रेक पे जाऊँगा तो I'll actually do that. I'm sorry about that. बीच में डॉट्स एंड लाइंस का एक जोक था जो मैंने आउट लाउड नहीं बोला, बट आई थिंक यू गाइस कैन एक्चुअली रीड इट आउट. इट्स एंड विनय का मुझे डीएम आया था कि मैंने आपका चैट स्किप कर दिया. नहीं, मैंने आपका चैट स्किप नहीं किया यार. वो एक्चुअली बीच में अगर आप देख रहे थे स्ट्रीम तो कुछ और फील्ड में चल रही थी थोड़ी स्ट्रीम, इसलिए मैंने शायद वो इमीडिएटली एड्रेस नहीं किया था. बट मैंने बीच में आपका सुपर चैट भी एड्रेस किया था कि आई डोंट थिंक वो गुरु दक्षिणा के लिए टाइम सही था. टाइमिंग थोड़ा ऑफ हो गया उसका, बट अदरवाइज थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स इट्स रियली स्वीट ऑफ यू. Oh, why? Socially viral. Hi. I mean, hi. Socially viral is in the chat. कैसे हो भरत? कैसे हो? Socially viral says, वाह ये सब ads कब आए और कहाँ आए? Okay, so I'll actually tell you a little bit about it. Yuvraj Singh, who is also a poker player, keeps making these ads. So it's Yuvraj and his wife actually, Akanksha, who keep making these beautiful ads for Spartan Poker. And I actually asked them for permission, and it was really sweet of them to allow us to play these ads for our streams. And I personally have been following their work for the past couple of years, and yeah. As MPC just posted as well, the duo is known as Suited Connectors, and they keep making these videos every year for IOPC, and it was really sweet of them to allow us to use these for our streams. And yeah, I'm personally a huge fan. They make other videos as well outside of IOPC, but yeah, IOPC is how I discovered them, and personally these are my favorites as well. Yeah. I think by now you already have a lot of information about that in the chat. So yeah, you can go by that as well. Regarding Kahai, I think they've also posted these ads on the Facebook groups. But otherwise, you can go to Yuvraj Singh's Facebook. If you want, I can also link it up in the chat for you. Let me check. Oh, Vivek Singh is in the chat. Tani006. अरे शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है आपका विवेक जी?
again one of my very close friends who got married. अब recently नहीं बोल सकता, अब तो हो गया 1 साल से भी ऊपर, but मेरे लिए it's still a recent change, so that's what I keep addressing. अभिषेक पाल ने एक और सॉन्ग का नाम भेजा, हलीली छेब मामी. Oh, is that it? I am not sure, but मैं एक बार देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता यार ये वाला तो. Let me see. Let me mute myself for a second. Let's try to play the song. Oh yeah. This is also one of the songs. And third song also Abhishek has posted. Oh wow. Alright Abhishek, you're on fire. Let's see if this is also correct. إذا ما تصدق هرباري عزو ديشاد عضي مقلن. I'm not sure about this one, but I'm pretty sure आपने आपकी रिसर्च ढंग से ही की है तो ये सही होगा मे बी. तो all right. So ठीक है. Damn, Abhishek, you've done your research. Damn. Also, the name of the song is Damn. All right. ये भी देखते हैं. الظلم كل بيعاني منه. يعني هاي إلك وما تكوني مسجونة. ये भी शायद कोई रीमिक्स वर्जन है, पता नहीं. I'm not sure. But thank you so much Abhishek. That is really sweet of you. Yep. All right. King 5 offsuit to easy fold. We now have close to starting stacks, so we don't need to kind of go wide or anything. But now we're back to this table where we have Kunal. Kunal is one of our favorite players on the stream because everyone loves a fish. Sorry about that. अरे Inderveer Singh on the chat as well. Hi. कैसे हो? चैलेंज प्रधान से GG. अरे यार अभी से GG मत करो, अभी तो बहुत लंबा स्ट्रीम बाकी है. Meanwhile, I think we're ready to register the third tournament of the day as well. Give me a couple of minutes to set it up and yeah. King 10 suited, alright, we'll play King 10 suited for sure. But first of all, let's register the Wanderer Day 1G, which is also another tournament we're streaming.
this sucks. I mean, I'm pretty sure Shipperment is also very aware of how Kunal is playing. So he's 3-betting, but he can't really call versus a 3-bet. So we'll fold. Also, we've gotten a 15-second time bank, which we'll use judicially this time and not spew around. Table 3. 9 versus 10s. Oh, damn. Kunal actually had 10s this time. We would have ended up flopping a top pair, and I think would have been a double up for us, but not to be, maybe. Ace-5 suited versus Shipperman's open. It's actually close, but since people behind us are so shallow, we'll actually 3-bet this. Because we don't really want to call and then get jammed on by the 5PB button. So yeah, yep. Remove this, add a new table, window capture. Oh, we get a fold, good for us. King Queen offsuit है हमारे पास on the other table. I'll just show it to you. I am flatting for now. You can't trust my word. And we flop the suckiest. We get the fuckiest flop possible. So we just fold versus a bet. Yes. And the name, this we'll remove, and yeah, add another text is, oh no, empty name 3. 8-7 suited, we'll just fold. No, entity name 3. Just give me a minute to sort this third table out. I've actually never played a third table on stream, so I have to make a new screen for it, make a new scene for it basically. So yeah, just give me a couple of minutes to sort that out, and then I'll be back. Yep, almost done. Settings, hotkeys, table 3 should come up on shift 3. Alright, let's go. I'm done. Cool. So now we have 3 tables running. We have the Saturday Prime 25L for a 4400 bind, in which we have close to a starting stack, and versus an 11 BB jam we have to fold. Then the second table is 880 bind 6L GDD tournament, in which we'll call 7s now. I mean 8s, maybe not even 8s actually, 9s plus I would have actually ISO'd, but yep, 7s we'll just call. And now we have a third table, which is a flight event. It's a flight to the 40L GTD Wanderer that we are playing. Yes. Coming back. King 5 suited will overlimp. And nope, nothing for us on the flop. Harnas Sandhu is actually not on the table, so this is practically a heads up spot. Can't really call versus Kunal. It hates folding anyway. Hitesh Jagwani says, good luck bro. Hi Hitesh, thank you so much.
Queen 5 suited, we'll just fold versus an open. Queen 9 offsuit on the other table. Also, we just open folded. Oh, yep. Coming back. धर्मवीर यादव से कौन सा टूर नहीं है ब्रो? धर्मवीर जो भी 3 टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ उनके नाम टॉप पे लिखे हैं. तो ये वाला है हमारा 880 रुपीज़ बाय इन 6L GTD टूर्नामेंट विच स्टार्टेड एट 7:30. ये है वॉन्डरर विच इज़ अ फ्लाइट इवेंट, द फ्लाइट टू द 40L GTD टूर्नामेंट फॉर buy in of rupees 880. And the third tournament that we're playing is a 25L GTD Saturday Prime, which is a 4400 rupee buy-in tournament. So yeah. सोशल वाले बोल रहे बाकी सब ठीक है. ये नितिन भाई अचानक से इतना अच्छा कैसे खेलने लगा है, इसके पीछे का राज बताओ. अरे ये आपको पता अभी लगा है, खेलते नितिन भाई हमेशा से ही अच्छा है. मे बी वो स्ट्रीम पे इतना ढंग से समझ नहीं आता यार. स्ट्रीम पे एक्चुअली ना सिर्फ खेलना नहीं रहता, स्ट्रीम पे 6 और चीज़ें करनी रहती हैं. तो स्ट्रीम पे आपको समझ नहीं आया होगा, बट नितिन भाई हमारे हमेशा से अच्छा खेलते हैं यार. शैलेंद्र से गुड लक ब्रो. थैंक यू सो मच शैलेंद्र. प्रकाश पंडित बोल रहा है उत्सव दे दो यार उसको टिकट. बंदा सर्च करके बता रहा है तो सही होंगे. हाँ यार मैं भी कन्विंस हूँ. इनफैक्ट जो 1-2 तो हमने जो सुने वो सही भी थे. सो या offsuit, we'll just fold. Coming back. Abhishek Pal says, do I get the ticket? Wait, what the fuck? I folded 7s. Damn, of course I wouldn't have folded 7th, man. Oh damn, we flopped a set as well. That is so sick. यार ये स्ट्रीम करते करते थोड़ा सा ना दिमाग हिल जाता है. I mean, of course 7th is a call there. उफ. Damn, ध्यान देना पड़ेगा यार टेबल्स पे. बातें करता रह जाऊंगा अदरवाइज तो मैं. So sick. Mohit says, bro, but as I remembered when you asked, you said only to guess the song but not the singer too. So honestly, Mohit, तब तक हमारे पास और बेटर आंसर आया नहीं था. But now that Abhishek has actually posted all the 3 songs, you will also be able to see कि जो actually वो आंसर आपने दिया था या अभिषेक ने दिया था. नहीं, अभिषेक ने नहीं. हाँ, अभिषेक गौतम ने दिया था ना एक आंसर. अभिषेक गौतम ने दिया था वो क्लोज टू ट्रू था, बट वो सही आंसर्स नहीं थे एक्चुअली. अभिषेक पाल ने जो हमें तीनों आंसर्स बताए, तीनों सॉन्ग बताए, वो करेक्ट आंसर थे. सो या आई एम गिविंग अवे दैट टिकट टू अभिषेक पाल. सो अभिषेक, इफ यू कुड प्लीज कॉमेंट योर ID, that would be great. I'll just note it down and then credit you the ticket. Okay. Akshay Sharma says, "Sup, my man? What is up? I don't see you on the tables, आजकल. Are you not grinding IOPC, Akshat? वैसे तो honestly मैं खुद नहीं grind कर रहा, so maybe I have just missed you on the table, but tell me about it. Are you grinding? 6.75. Let's 3-bet. King 3 पे we definitely see bet small. Queen 4 offsuit is a fold.
Wow, big blind cold called R3 bet. Not something I expect, but I mean, I don't know what to make of it. We'll see bet. Let's see. Fives on king. This thing we'll actually bet again. If we get raised, I think it's an easy fold for us. But otherwise, we'll probably just check back river. If we get raised on the turn though, that would suck. And yeah, we do, so we kind of have to fold. Because I don't think anything except for a king X or like pocket threes actually raises here. So yeah, we'll let him take it. फ्लेम बोल रहे फ्रॉम IIT टू पोकर, ये कैसे हो गया? मतलब डिस्कॉर्ड पे बताता हूँ यार किसी दिन। ये तो ऑनेस्टली लेकिन इतना सरप्राइजिंग है नहीं इसमें कुछ। तो आई डोंट रियली नो क्या बताऊँ इसमें। वाई पोकर का आंसर कर सकता हूँ मैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज मच टू द अदर पार्ट ऑफ इट। Abhishek Pal बोल रहा है, who got the ticket? Abhishek, you got the ticket. Please comment your ID and I'll credit the ticket to your account. Basically, I'll just push your ID to the back end and then the concerned people will actually credit the ticket for you. Oh, we have Happy in the chat. Hi Happy, कैसे हो? Thank you so much for the luck. Anyway, अब 3 टेबल्स हो गई हैं। मुझे स्ट्रीम पे 3 टेबल्स मैंने कभी खेली नहीं है स्ट्रीम पे पहले, so I'll try to focus more on the tables for a bit. Let's make some stacks. I think all of you are also here first for the poker and then for all the bakchodi. So yeah. I'll comment for you, Abhishek. Also, yeah, as Naveen said, if you could just DM your ID to MPC's Instagram as well, that would be great. Akshat बोल रहे क्या बकवास, losing every single day. I mean, isn't that the point of these series? इससे पहले कुछ अलग हुआ भी है क्या? Table 1 पे we got a 4x raise from UTG, so we kind of decided to just jam with jacks for 25 bigs. Oh, and we've gotten called behind. Damn, this doesn't look good. I hope we run into ace king or tens. Oof. Now though, I think jack has to be our savior. We need to clip a jack to win this hand now. I don't think we are ahead. Oh wow, no, we're dead. All right. Can't do much. Do we want to rebuy on the same table or do we want to rebuy on another table? I think another table makes more sense. So we will try to rebuy on another table. But not to be. We actually got it on the same table. That's okay. We tried. Pocket queen on this table, we open, and then king jack suited on this one. We can jam actually. In fact, I think jamming makes more sense, so we'll just jam it. Yeah.
on my Mac has almost a starting stack, so yeah. Hit called by 8s, can we hit a 10? Not really. That's okay. Pocket queens, we actually get 3 bet, so we'll 4 bet. We'll 4 bet to 13 bigs and go from there. Meanwhile, on the 6L, we would have open jammed this, but now it's close. But I think I'm okay to take this flip for 10 bigs. Good luck. And on the other table, we're calling off queens, and we run into aces. How about that? Wanderer में भी हम rebuy करते हैं on another table. Actually, we fine with this table also, but we need to re-enter, so that we'll do. We get a new table over there. We'll take it. It's okay. It's all right. All right. We got a new table in Wanderer. We'll take it. Akshat बोल रहा है, but yeah, I haven't been on the same table. I'm mostly done with MTTs in 5 minutes. With 5 minutes later left. Oh, that is so like me. I have had the same experience, I think, the entire IOPC. James Dean is in the chat. Let's get the hour of Shar. No, why? Hour of power. All right. Yeah, right. I was like, why would you wish me an hour of shower? We're already under that. Prakash Pandit with the useful tips always. Music का volume कम कर दिया मैंने. Thank you so much. कपीश बोल रहे हैं भाई भूल गए लग रहा है. भाई आपको भूल कैसे सकता हूँ? आप तो किंग मेकर हो हमारी स्ट्रीम के. यू आर द एलिजिड किंग मेकर ऑफ द स्ट्रीम. आपको नहीं भूल सकते यार. आप आई थिंक मुझे दिखे नहीं आज चैट में पूरा टाइम. आप बिजी थे लग रहा है. Nine ten of suit. We would have liked to see a flop, but not to be. We would have called a RFI, but not a 5x ISO. I think KP ISO'd that size so that we fold, so we'll pay heed to that. That is unfortunate. Abhishek ने बोला है please check your Insta PM. Okay, all right. I'm doing that right now. 1 second. Let's see. क्या कह रहे हो आप? Oh, damn. अभिषेक it looks like ये YouTube का वो हो गया. I'm sorry about that. मैं I'll sort this out. At the end of the stream. So yeah. I'll get it checked and get it sorted at the end of the stream. Please. In fact, I'll just respond to you on DM itself. Let's get it checked and sorted post stream.
Thanks, mom. Meanwhile, ace 10. Do we want to defend? Do we want to jam? Is it actually int? Oh no, it's not. I mean, there is an argument for actually calling here, but multi-way, I think jamming would make more money, so we'll do that. Did he actually trap us? Oh no, what? Wait, what? Alright, I mean, I don't know about this, but it's fine, it's alright. Coming back. Mario Kart jammed and then Mean Streets re-jammed 32 bigs. Easy fold for us. Uh, 5-4 suited, we are actually just going with it. Honestly, it's profitable, but yeah, it's fine. I mean, I was going to say it's profit. It doesn't really look that good, but it's profitable. But we got a fold, which is really good. 9 bigs for queen. 9 offsuit is not. Yeah, I would have actually folded even if it got folded to us. But now it's an easy fold for us. Yes. We need another hour of power. 20 मिनट सर्वाइव करना है बेसिकली हमें ये वाला आर. अगर हम तीनों टूर्नामेंट सर्वाइव कर पाते हैं 20 मिनट, देन आई थिंक वील गेट आवर आर ऑफ पावर एज जेम्स डीन सेड. म्यूजिक भी थोड़ा चेंज करते हैं यार. Maybe it's the music. Sorry. This would be fine. Let's stick with it for a bit and see how it goes. We'll just fold. On this one, 8-10 suited is an easy fold. 9-10 suited actually I would just jam, but if only. 4-8 offsuit, easy fold.
Vipindi says worst time to get jacks and queen. My story is exactly the same. It's a part of the game. So many times iska ulta bhi hoga, so it's fine. We have to make the times when we have the aces and when we have the queen versus the jacks count, so it's all right. Six seven suited UTG से हम fold ही कर देंगे. I would have actually played it if I was in a late position like cut off या button, but EP से we'll just fold. Five deuce suited, five deuce offsuit for a 7 BB jam actually. We'll fold. Ooh, looks like we have a hand to stack off 6 big blinds. Can we double up in this one? We just need to survive with like 15 bigs in this break, because the hour of power is coming. It's coming in another 15 minutes. So that's all we need to survive. Let's see if we can do that. Easy jam. Good luck us. We get called in one place, we get called in two places. Flop looks good. Unless either of them is at a set. Because I don't think either of them calls with better than jacks pre-flop, like just flats. King is a scary card, but it went check. Let's see if jacks are... Oh wow, jacks are good. And now we have 20 big blinds to survive this hour. The hour of Shar. I think we are getting through it. I think we are getting it. King 9 suited on this table. We'll defend. Try and flop well. Sorry about that. Let's hope KP doesn't get frisky. He doesn't, so we'll call. Jack 8 3 2 spade 1 diamond. We'll just check fold. I don't think there's anything for us on this board. Yep. Versus a 50% size, easy fold. In fact, versus any size, you would have just folded pretty easily versus EP range. Golden Boy says all the best भैया. Hi Golden Boy, thank you so much. कैसे हो आप? Queen Jack offsuit, maybe we'll jam versus a button open. Let's see. Ouch. Can't do much versus this one, I guess. We just have to fold. Because I don't really see him folding versus a jam and then calling with Queen Jack offsuit for a 5x raise makes little to no sense. So yeah, just fold. Alright, looks like this is going in as well. Time to get some chips in the Saturday prime. Versus the open, we'll just rip it. I don't think there's much else to do with jacks. Oh wow, okay. This is
tricky. I mean, we could again potentially run into a better hand, but I don't see myself folding this. So good luck us. Maybe this is the last hand for us in Saturday Prime. But if we survive this one, we'll have a pretty decent stack. We'll have at least more than the starting stack. Ouch, ouch. Looks like again we've run into something like pocket kings. Maybe we can clip a jack this time. Let's see. मुझे अभी मैं देखना चाह रहा था कितनी देर से लाइव है, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लाइव काउंटर तो चलाया ही नहीं कभी. Can I put a reverse countdown? I don't know. Anyway, I'll start it right now. Maybe we'll give ourselves a 15-20 minute stream based on how we're running today. Let's see. But first of all, we need to clip a jack in this one, because I'm pretty sure PS Sunshine has ace king or better. So, I mean, ace king or queens plus. So yes. Oof. Not good at all. I think that's the end for us. Yes. That would be the end of Saturday Prime for us. No hopes, no more. Let's try to win some moolah back in the 6L and the 40L. Queen 9 offsuit, we'll just fold. King 5 suited, we'll actually try to RFI. Yes. We'll happily take it. Naveen Kumar says, does queens, jacks, tens fold equity, and what stages spots folding these hands? Okay, so basically you're saying what stages I would think about folding these hands, I'm assuming. So yeah, 1 second, I'll just give you an example of where I would consider folding jacks in such an early stage. First of all, let's first try to VPIP this one. And I'll try to pull up the replayer to show you a spot where I would actually consider folding with something like jacks or tens. Ace queen jack is actually tricky, but I would start with a bet. Won't make it too big, because I don't think we get a lot of folds, and we're going to be out of position throughout the hand. So yeah, kinda tricky though. I mean, we could already be drawing dead versus a king 10, for example, or be drawing thin versus like queen jack. But I don't think ace queen or ace jack would actually flat pre-flop. This is a okay turn for us to actually check, to be honest. I mean, because our flop betting range has a lot of sets, has a lot of two pairs. Versus a bet, I think we still need protection. We still get called by paired draws, so I'll just rip it. Hope to get called by like ace queen or like ace 4. No, we can't have ace 4 of spades, but maybe king queen of diamonds or something like that. Let's see. Yeah, like jack 8 of spades is, I mean, I would have folded that hand personally, or actually checked back the turn, but it's all right. That's why we rip the turn. Saturday Prime. All right, yeah. So I'll just put this up.
the replay on hand history, right? Yes. Okay, cool. So for example, you see this this one hand. Let's just run through this action really quickly. So let's think about their ranges. Let's try to think about what these guys have. Okay, so first of all, no connection opens off a 22 big blind stack on a table which doesn't seem to be very soft or very happy holding. So he can't really be opening too wide here in this spot. So let's try to give him a range. Whenever we start thinking about a person's range, what I personally feel is a good hack around it is कि you start with the pocket pairs. So let's try to figure out the worst pocket pair that he would open in this spot. Thinking about deuces, threes, fours, I don't think deuces, threes, fours really benefit from opening in this spot. Because the thing with deuces, threes and fours is that when you're in early position, you have, let's say 1, 2, 3, 4, 5 or 6 people left to act behind you. And even if you assume that all of these guys would VPIP, say close to 10% hands, can I just show you a calculator as well? I think I can. We don't really need this. So yeah. So to begin, let's say people behind you just VPIP 10% of the hands. So even if all 5 of these people VPIP just 10% of the hands, let's see how many hands they would actually end up calling, VPIPing basically, versus us. 0.9 raised to the power 5 is 5909, and minus 1 is 40951. Ace 10 off. Meanwhile, I have ace 10 off on this one. It's okay to actually call or 3-bet. I'd personally just call over here and see a flop, because I don't really expect a lot of folds versus 3-bets. Wow. I mean, let's just rip it honestly, because he stacked off with jack 8 and I'm sure he'll still stack off with like ace 5 or ace 6 over here. So let's just rip it and hope. Yep, he just does call us off with ace 5, which is good for us. Easy fold. Meanwhile, on the other table versus jam and a call, I'm folding ace 5 suited. Coming back to the first table anyway. So as I was saying, so this is how many hand will get VPIP'd around behind us even if we assume that only 10% of the hands will get VPIP'd by each of the players, which is actually not even true. It's more. This comes out to be 40.9%. So when we open, at least 41% of the times people behind us will actually call or raise, and in all of those cases, I don't think deuces, threes, fours really are very comfortable playing out of position. So for that reason, I think calling deuces, raising with deuces, threes, fours here is not really a thing. It's not really a very profitable proposition. So yep, that's the first thing. So because of that, my worst pocket pair that I open in this spot would be something like 5s or 6s. Could be either. Yep. And besides that, if you think about suited hand, let's say all suited aces can open. If you're slightly tighter than maybe something like ace 5 suited, you would start opening. Then all suited broadways, I think you'll definitely open something like king 9 suited, queen 9 suited, jack 9 suited. So basically 9x suited broadways.
would all open. And then if you think about suited connectors, something like 9-8 suited I think would open, but that's pretty much it. And then when you think about offsuit combinations, you have ace 10 off maybe at the bottom of your range, and then king jack off, king queen off. You would also try to VPIP from this spot. So the thing with shallower stack depths is that you want to open a lot of hands which have blockers to people's rejamming ranges. So you want to have a lot of king x, queen x, jack x, ace x in your range to actually VPIP. So which is why we have all of these suited broadways, all of these offsuit high card hands that VPIP. Meanwhile, 12 bigs we'll just open rip from here. Not a question, I guess. I mean, there's an argument for opening as well, but 12 BB in a tournament where I don't think people overfold is okay. King queen calls and we brick. We can't really rebuy because I think starting stack right now is like 9 bigs, so easy for us to fold. Queen 10 suited, of course, we'll call off versus the 4BB rejam, and we win. All right. So yeah. Anyway, coming back to this one here. So yeah, his opening, we've already come up with an opening range for no connection, which is like a 14-15% opening range, which seems fair, seems reasonable of a 22 BB stack. I don't think he'll go any wider. Now let's, so we know Surma Bhopali is a very capable player, very smart player. So he already knows that no connection is not opening a very wide range. So if he is electing to 3-bet that range, it's got to be pretty tight. It's got to not be basically as wide as somebody 3-betting versus a late position open or of a big stacks open. So yeah, that is established. Now let's try to break it down into the exact range. So for example, so how we want to break down a 3-betting range is, first of all, we know that there will be a value range that he will stack off with if he gets 4-betted on. So that is the first thing that we'll want to think about. So the 3-bet value range. And once we have that 3-bet value range, we'll try to think about the bluffs that go best with that 3-bet value range. So in this spot, again, we'll start with the worst pocket pair that we think he would want to stack off with. Think about, we've got a table change, and yeah, still a pretty good table for us. So we'll take that. So yeah, coming back to Surma's 3-betting range, we have to think about the worst pocket pair that he does this with. Basically the worst pocket pair that we know he will 3-bet and call off. So if you think about something like 10s, I think 10s would be a borderline hand that you want to 3-bet and call off a 20 BB jam with. So 10s I think would mix in at some frequency, and then jacks and above will 100% of the times 3-bet. So yeah, I think his value range in terms of pocket pairs is 10s plus, or 10s, jacks, queens, kings and aces. Then if you think about strong Broadway hands, I think ace king suited would 100% 3-bet and call off. Ace king offsuit would also 100% 3-bet and call off. Then besides that, what do you think about ace queen suited? I think ace queen suited is borderline. It comes down to your personal choice. If you think this player is wide enough, you would want to 3-bet call off. If you think this player is tight enough, you would just call and try to basically either induce people behind you to jam and then call them off, or else just play post flop and try to flop well. So yeah, in terms of value, we've narrowed down Surma's range to 10s plus ace king. Now let's try to come up with bluffs that would go really well along with this range. So when we want to think about bluffs in a particular spot, what we want to see is that there are a couple of things that we want to see. One is that we want to block the range that the initial aggressor would jam on us with. So we want to block a lot of high cards. So because we know he will rejam with a lot of high pocket pairs and high card hands. Like something like ace king would always rejam on us. Something like queens plus kings, aces would always rejam on us. So we want to have a lot of blockers for these hands which will rejam. So we want to have a lot of ace x's, king x's, queen x's in our range. And besides that, we want to have cards which unblock their folding range.
So whenever we 3-bet in a particular spot, our first idea is to actually, whenever we bluff 3-bet in a particular spot, our first incentive is when we get a fold from the initial aggressor, right? So let's think about the range that this initial aggressor would open and then fold. Let's say something like Queen Jack suited, Jack 10 suited, something like 5, 6s, 7s, 8s, 9s are the primary hands that he would actually open and then fold versus the 3-bet, right? Especially, at least not rejam. So we want to not get rejammed on as a 3-better. That is our first priority. So yeah, we want to unblock a lot of his 7, 8, 9, 10 and Jack X's. So now we have two things that we want to achieve when we 3-bet in this spot. We want to have a lot of Ace X's, King X's and Queen X's. And then we want to not have a lot of 7x's, 8x's, 9x's, 10x's and Jack X's. So now if you think about hands which have such qualities, you can probably come up with something like Ace 5 suited, Ace 4 suited. So yes, you're absolutely right. Ace 5 suited, Ace 4 suited has some pretty good 3-bit candidates in this spot because they block Ace X and they also unblock 7, 8, 9, 10 Jack. So that's a very beautiful combination for us. I'll just quickly check what's going on in the chat. Jennifer which says no connection min raise show strength. I mean that is you just over reading into a range because a 22 BB stack will always min raise. I mean I don't think there is much like there is any other play with the 22 BB stack, so not really. It's unfortunate that he showed up with a hand this time, but I think he will have plenty of hand in the same opening range. Tete Lotha says, I am also Spartan player, help me out with 2 buy-in throw. I mean, I wish the world worked like this, Tete Lotha, but it doesn't really, sadly. So, can't really do that. I'm sorry about that. Anyway, so yeah, coming back. Ace 5 is a pretty good option to 3-bet in this spot. Then we have to also think about some king high hands. So let's say for example something like king 8 suited, king 9 suited, you could actually choose to 3-bet because the thing with 8x 9x is that you're simply just unblocking the pocket pairs, which is not really a lot of combination. Majorly what we want to unblock is the 10x's and Jack X's. So we want to make sure that we don't have a 10x or a Jack X when we 3-bet, and we have a Ace X, King X or a Queen X when we 3-bet. So something like King 9 suited, Queen 9 suited could also work beautifully as 3-bets. And even something like Ace Queen offsuit honestly could actually be a pretty good 3-bet in this spot because you know it's going to be tricky to actually play that multi-way, because when you call, if you actually like to call Ace Queen offsuit in this particular spot, the hand could go multi-way and then it's very, very tricky to play Ace Queen off multi-way. So something like Ace Queen offsuit could also be a very good 3-bet. So yeah, that's the idea about 3-betting. So now that we've come up with the 3-betting range for this particular guy, we can similarly move on to other people's ranges. Jacks actually in our spot is actually one of the bottom value ranges. So like I don't think 10s we would jam in this spot. Jacks is actually the bottom of our pocket pairs that we want to jam over here, which we do. And then going ahead for this guy, now this guy already knows that Jacks plus Ace King is the worst of this guy's jamming range. So if PS Sunshine for example gets dealt pocket 10s in this particular spot, I think I would already just open fold it. I don't think that's even a question. Even Jacks is a tricky call in PS Sunshine spot, but I don't think he will fold Jacks. But yeah, so 10s is already a fold in PS Sunshine spot. So if we think about his rejamming range, it has to be something like Jacks plus Ace King suited. Ace King off would also be close, but I think it is okay if you stack off with that. Now, coming back to no connection, he already knows that there are two very, very tight jams that have happened behind me, so I don't really get to call a lot. So in his shoes, I think Jacks also becomes very marginal. It's actually very comfortable to fold. I don't think Jacks would make money ever calling in this spot. So for no connection, I think Jacks is also a pretty clear fold.
Now when no connection also chooses to stack off for Surma Bhopali in this spot, he can be pretty sure if he has 8s, 9s, 10s or jacks in this spot that he's beat. So yeah, I think 10s, jacks is a pretty easy fold now for Surma. He would just stack off with something like queens plus and maybe ace king suited. Considering the fact that he's already invested 6 big blinds, I think even ace king off is an okay hand to stack off, but can't really be doing very well. He has to be aware of that. Oh yeah, I think as played, everyone kind of abided by these rules and still had to call off. Ace king off, there's an argument for folding ace king off in this spot, but I think equity dictates that you can actually call it off. So yeah, that is it. Meanwhile, coming back to the lone table that we have left, we have 60 big blinds in the Wanderer. Give me a second. Alright, we ISO'd and then 753 I think it's fine to actually bet or check. I'm checking because if someone's so passive that they limp a lot, I don't think they'd start bluffing on the turn. So yeah. Let's just bet small for protection. Range protection basically. Alright. Ronnie Singh says, good luck on today's stream, bro. Thank you so much. We're already down to the last table, but it's alright. It's alright. Ace-10 suited, we'll call. You don't want to 3-bet fold. फ्लेमर से ऋषभ के बकवास जोक्स को मिस कर रहा हूँ, बात तो सही है, बट ऑनेस्टली आज की स्ट्रीम थोड़ी वैसी रन गुड नहीं होता स्ट्रीम पे तो फिर मज़ा नहीं रहता ना. आई थिंक हमने अपना इनिशियल रन गुड एग्जॉस्ट कर दिया है, अब हमें खेलना ही पड़ेगा अच्छा, सैडली, जो कि थोड़ा टफ है, बट लेट्स सी. Ace-10 on Ace-King Queen. I mean, I do have Jack-10 suited as well, so I will have the nuts over here a lot. But without a spade, I don't think I'll achieve much by betting. I'll just check. Jennifer says for no connection, only kings, aces would be viable option, right? Not also queens. So yeah, queens would be pretty close for no connection, but I don't think it will really fold. I mean, it sucks, but there's so much value in the pot that I think queens would just call off. So yeah. Alright, we'll fold. Oh, Jennifer says, and for Surma, AK was a fold then. So the thing with Ace King is that it blocks a lot of aces and kings combinations, and then it basically needs let's see how much equity it needs, and that would dictate whether he can call them off or not. So going back 1 second. Give me a second. This. Why?
Mm-mm-mm. Yep. Mm. So, yep. Going back to this hand, when it comes back to Surma, he has to call 23 big blinds to win a pot of how many? 23 in 20 is 43, 43 and 2.5 is 46, 46 and 30 is 76, 106. So he basically has to call off 23 bigs to win a pot of 106 big blinds. So he needs something like a 21 or a 22% equity. So I'll just show you Flopzilla पे एक बार कि कितनी equity है इस king of suit के पास, and then we can probably decide if it's a call or not. 1 second. Let's quickly try to give everyone ranges. Switch to multiplayer mode. I'll put it over here because I don't know how much of it is visible otherwise. So first of all, हमें अपनी stack of range डालनी थी, which we decided was 10s plus ace king. Ace queen suited would be close, but for the sake of this particular experiment, let's just give ourselves that. Then let's give the button a rejamming range, so he knows that we're jamming 10s plus ace queen suited, ace king off. So I think he will call off something like jacks plus ace king. Now going back to no connection, I think he knows that people behind him are stacking off just jacks plus ace king, so he will, let's say, call off something like jacks plus ace king suited himself. And maybe he's feeling frisky, he'll also call off ace king offsuit. I have a hand on the table, so I'll just show that to you. We defended ace 9 offsuit from big blind versus the cutoff open. I think it's close. We can raise or call, either is fine. Let's call this particular one. We also have a club. I don't think you can just fold as yet. A lot of hands do get there by the river. So if he does elect to bet again on the river, it's going to be pretty tricky. Yeah, it sucks. We also block some combo draws, which he would have 3-barreled. Plus anyway, versus a 2x pot size bet, I think we need to under defend. So we'll just fold. Yep. Cool. So now that we have these 3 ranges, we need to see if ace king offsuit has. So we'll just give this particular guy ace king offsuit. And if you look at his equity, it's actually 13.07. We already established that he needs 22 or 23% equity over there to call off. So yeah, in this particular case, I think ace king offsuit is an easy fold there. Sadly, not a call for Surma there then. Let's actually see what hands are okay to call in his shoes over there. So if we see queens, it has 26.9% equity, so queens would be could be a fine call. Jacks, on the other hand, only has 19% equity, whereas it needs 23%, so jacks would be a fold.
and ace king suited has 17.5% equity, so ace king suited would also be a fold. So yeah, queens plus is actually what he can profitably call. You can actually see that over here as well. Ace queen suited, if we see, has 15.7. So ace queen suited actually has more equity than ace king offsuit, because of course the flush is pretty much alive versus the ranges that we've given other people. So yeah, for Surma, queens plus was the range that he can actually call off, unfortunately. कमिंग बैक, देखते हैं स्ट्रीम पे क्या चल रहा है. बहुत डीप पोकर की बातें होने लगी, थोड़ा सा स्किप करते हैं, चिल करते हैं थोड़ा वापस. शशांक सिंह इज इन द चैट, सेज गुड लक. हाय शशांक, थैंक यू सो मच. अभिषेक बोल रहा है, यू आर अ कोच इन सम पैरेलल यूनिवर्स. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय दैट. आई मीन, आई अंडरस्टैंड इट्स इफ यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद रेंजेस एटसेट्रा, तो वो like me just saying out ranges won't really explain much to you. But yeah, since you're already playing on a particular table, it's really tricky to show tools. And yeah, I mean, जैसे Flopzilla मैंने अभी दिखा दिया, but I don't think it's actually advisable to use Flopzilla while you're playing. So yeah, maybe we can study ranges etc deeper in one of the study sessions, and then probably it will be more clear to you and you'll be more comfortable actually thinking about the ranges. Ace-10 offsuit, we'll open. Jennifer, dude, I mean, Jennifer just got triggered for no reason. I think you can just calm down. I think it's all right. If somebody is not getting what I'm saying, it's of course their own. I mean, you can't really judge that. So fair. Sayam Jan says good luck bro. Hi Sayam, thank you so much. कैसे हो? Manish says good luck. Hi Manish, thank you so much. Thank you for tuning in. अनुराग says good luck रानी. Hello अनुराग, कहाँ हो, कैसे हो? मैं पूछता किसी टेबल पे दिख क्यों नहीं रहे, बट मैं खुद ही बर्स्ट हो गया हूँ सब टेबल्स पे. Ace-10 offsuit, we'll see bet. सैमजन बोल रहा है, भाई मैं कितना भी अच्छा खेलूं, बेस्ट हैंड पे भी लूज ही कर रहा हूँ, सजेशन दो भाई, इस गेम में क्या करूँ, चक्कर में लॉस बढ़ रहा है. आई मीन, आई अंडरस्टैंड कि बहुत बार आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी आप हार जाते हो, एंड इट इज़ रियली टिल्टिंग. बट दिस हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ देम एज वेल. लाइक इवन द बेस्ट poker players have these phases where they could be doing everything right and still not be winning, and this can go on for very long periods as well. All you can do in these situations is make sure कि आप ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप improve करते जा रहे हो. So yeah, that's pretty much it. 7-7 पे there's an argument for C betting this or checking this as well. I'll start with the check. Jennifer says thought so cool. Oh, I think you're talking about the ace king wala hand. Now we can actually bet. We can generate some folds from under pairs. Something like 8s, 9s, 6s if they called pre-flop. Yeah, Jack X I don't think changes a lot, and he still has a bunch of 8s, 9s, etc. So we'll barrel again, try to get some folds from them. Yep. We can still have aces, kings for what it's worth in this particular spot. So yeah.
This is tricky. Would 8-9 check back the flop? He actually can already have pocket threes maybe. But of course, it's an easy fold for us. No point bluff catching. Because I don't really see a lot of bluff in his range anyway. So yeah. Naveen Bulra, did we not just by check calling flop turn with ace-9? Are we not allowing our opponent to realize the EV? I mean, Naveen, sure we are, but the thing is, we can already be behind as well, right? I mean, it's not like we are always ahead. There are hands in the villain's range which beat us already, right? So we have to be cautious versus that as well. So yeah. I mean, honestly, though, it can't be bad to check raise there either. So, yeah. Denver says ranges should be a topic in maths. It's so cool. It should be taught in maths. I appreciate the sentiment towards ranges, but I think permutations combinations is already combinations is already one of the very important topics in maths which is taught in schools, and it is still pretty cool. And there is a lot of card problems in permutations and combinations. So yeah, I think it's already pretty much a part of maths, at least in class 11th, 12th and beyond. So yeah. In college, game theory is also another very vast topic. So yeah. अनुराग बोल रहे क्या बस्ट हो गए, रीबाय ऑन है. आपकी टेबल्स खोलनी पड़ेंगी लग रहा है. Ooh, ace queen of suit. I'm sorry about the disturbance. Give me a couple of minutes. I'll just get done with dinner and I'll be back. I mean, you can still see me. I'll just go on mute for a couple of minutes.
Without a club blocker, I don't think we really get to bet this river a lot. So I'll just check fold. वेलकम बैक, व्हाट इज अप। नवीन का मैसेज पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नवीन? ओह, उससे पहले साइन का मैसेज पढ़ रहा है। भाई तुम्हारी स्ट्रिंग काफ़ी नॉलेजेबल है, मज़ा आता है। आई थिंक तुम्हारा स्ट्रिंग करना ही गिव अवे है मेरे लिए, तो दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू मैन, सो स्वीट ऑफ यू। आई एम ग्लैड कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा मैं अगर आपकी पोकर नॉलेज में, या फिर जस्ट इन टर्म्स ऑफ आपकी पोकर स्टडी रूटीन में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, आई विल बी ग्लैड।
Naveen says, as you covered like HUDs in education stream, can we discuss some topics on sports play, push-fold strategy, 10, 15, 20 BB, playing with 20, 30 BB during later stage? One session with tools, second maybe without tools. Reason being, most of the current poker community does not use tools. They play with ranges, intuition, table dynamics. For sure. So नवीन, मैं एक चीज़ जैसे बता देता हूँ इस चीज़ में जो मुझे लगती है पर्सनली, कि बहुत सारे लोग जो स्ट्रीम वगैरह देखते हैं ना, वो सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होते इन टर्म्स ऑफ पोकर. तो जैसे मैं अभी हैंड रेंज ब्रेक डाउन कर रहा था उस पर्टिकुलर स्पॉट का, भी मुझे करते करते भी ये चीज़ रियलाइज हो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, I'm just getting a call. I need to yeah, just give me 1 second. Yes, I'm back. So as I was saying कि जो ये वाली चीज़ है ना, विद और विदाउट टूल वाली भी, इसमें एक सेशन में ये वाली चीज़ हो नहीं सकती. तो मैं दो टाइप की चीज़ें कर सकता हूँ इसमें. या तो आई स्टार्ट फ्रॉम द एब्सोल्यूट बॉटम, रॉक बॉटम, और मैं सबसे पहले तो एक्सप्लेन करूँ कि किसी की रेंज को बनाना क्या होता है, रेंज होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक a lot of people who start playing, in fact a lot of people who keep playing poker also without studying, उनके लिए कभी रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं. उनके लिए हमेशा इंडिविजुअल हैंड्स पे बात रह जाती है कि ये 4 हैंड्स या ये 5 हैंड्स के बियॉन्ड सोचना थोड़ा टफ हो जाता है लोगों के लिए, इफ दे हैवंट रियली स्टडीड. So if I want to really do one for the community, मुझे either I have to start from the absolute basics, कि मैं फ्लॉपजिला पे सबसे पहले तो आपको ये रेंज कैसे बनती है वहाँ से शुरू करके I take you up to how forming a range is important and what type of concepts, what type of theory goes into making ranges. Like for example, अभी जो मैं स्पॉट कर रहा था उसकी बात मैं करने लगा था बीच में, तो मुझे करते करते भी रियलाइज़ हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर इनसे पहले के 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है तो आपको ये पूरा ही गार्बेज लगेगा. मतलब आप, जैसे अभिषेक ने बीच में बोल भी दिया कि यहाँ का कोच तो नहीं लग रहा, तू कहीं पैरेलल यूनिवर्स में होगा कोच, ये कोई बात है थोड़ी है करने की. क्योंकि एंड आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट, बिकॉज एग्जैक्टली ऐसा ही फील होगा आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल आके मैं यहाँ पे अब मुझे भी नहीं आती यार, मैं ऐसी कोई बात बोलनी चाहिए ना मुझे जो मुझे भी आती है. हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉकेट साइंस की बातें करने लगूँ, लेकर बहुत सारे मैंने पर्सनली, मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए इतना लाइक इंटिमिडेटिंग नहीं है. बट अगर मैं आके रॉकेट साइंस की बातें करने लगूँ आपसे, मैं मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्कस करने लगूँ आपसे आके यहाँ पे, तो आप में से कोई भी उठ के बोल देगा ना कि क्या चूतिया है क्या यार, क्या बातें कर रहा है. दैट इज़ बिकॉज उसके पीछे की थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है, उसके पीछे का आइडिया भी आपको नहीं है. मैं कोई बात क्यों बोल रहा हूँ उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है आपको कोई बात समझने के लिए, राइट. सो देयर इज़ सो मच दैट गोज बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल कि टेबल डायनेमिक्स में पुश फोल्ड स्ट्रैटेजी एडजस्ट कैसे करनी है, देयर इज़ सो मच दैट गोज बिहाइंड, देयर इज़ सो मच थ्योरी दैट गोज बिहाइंड इट कि मैं एक सेशन या 2 सेशन में वो चीज़ पूरी कर नहीं सकता. तो ईदर आई हैव टू डू लाइक 10 सेशन थिंग और अ 15 सेशन थिंग फॉर दैट टू मेक सेंस, और एल्स इट वोंट रियली बी यूजफुल फॉर द एंटायर कम्युनिटी. वो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगी फिर. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इन दिस इज कि मैं भी थोड़ा सेल्फिश ही हूँ यार. मतलब if you want me to post like ground up say puri strategy videos on YouTube, I don't think that's fair on your part also, because like you can't expect all of these resources for free. But same way, but saying all of that, having said all of this, what we can actually do is हम कुछ specific topics decide कर सकते हैं जिनकी videos हम study stream में कर सकते हैं. Topics which could actually be useful for everyone. For example, we can discuss the basics of ICM. बहुत लोगों ने ICM सुना होता है, बहुत लोगों ने ICM पढ़ा होता है, कुछ पता होता है. मोस्ट लोग जो पोकर खेलते हैं, जो फाइनल टेबल करते हैं टूर्नामेंट में, वो ICM यूज़ करते हैं इन सम फॉर्म और दी अदर. भले ही वो उसको डर का नाम दे, भले ही वो उसको स्ट्रैटेजी का नाम दे, कुछ भी नाम दे, यूज़ करते हैं ICM को. बट
एक वेल राउंड स्ट्रैटेजी नहीं होती लोगों की ICM के अराउंड अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उसकी. सो फॉर एग्जाम्पल ICM इज़ अ टॉपिक आई थिंक जिस पे हम कॉमन ग्राउंड पे बात कर सकते हैं, बिकॉज ICM ओवरऑल फंडा सिर्फ इतना ही है कि आपको टेबल पे कुछ चिप्स मिलते हैं और उन चिप्स की रियल लाइफ में कोई मॉनेटरी वैल्यू है. उन दोनों के एसोसिएशन की वजह से क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या चेंजेस आपको अपनी गेम में लाने होते हैं, वो ICM है, राइट. सो ये इज़ अ टॉपिक जिसमें हमें इतना ज़्यादा रेंजेस वगैरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है. हम ब्रॉडर स्केल पे बात कर सकते हैं, देन कम्युनिटी लेवल पे हम बात कर सकते हैं ICM के बारे में फॉर एग्जाम्पल. तो इसलिए ICM इज़ अ टॉपिक विच आई थिंक I can do a video on. Similarly, there can be other topics also. In fact, you know what? Let's do one thing. मैं एक टिकट गिव अवे करता हूँ इस ही चीज़ के लिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ द गिव अवेज, आप मुझे बताओ कि आपको क्या स्टडी करना है. आई विल ट्राई टू, अगर वो एक वीडियो में होता है तो एक वीडियो में, अगर वो एक वीडियो सीरीज बनानी पड़ेगी उसके लिए तो वीडियो सीरीज बनाते हैं. बट आई विल पिक आउट अ टॉपिक फ्रॉम योर सजेशंस एंड जिसका भी सजेशन मुझे पसंद आया उसको आई विल ऑल्सो गिव अ टिकट टू वंडर डे 1L. So yeah. Meanwhile, we have pocket aces. All right, let's try to make some money. 10 BB stack से open आया है. I can 3-bet this, or I can call this also. Either is fine, but I'll just 3-bet. I think because calling also reeks of strength. I think so. We'll just 3-bet rather. Wow, Liu Kang calls. That's very fishy. I think we'll just jam, it's fine. हाँ, मैं गिव अवे पोस्ट कर रहा था, राइट. सो मैं गिव अवे पोस्ट कर देता हूँ पहले. इस एक्सक्लूडेड विल फोल्ड. All right. So yep, this is for a giveaway. मैं ये बढ़ा सकता हूँ ना, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा. आई डोंट नो वाई ये हमेशा छोटा हो जाता है. यस, ऑलराइट. So yeah, suggest me a topic for one of the study streams. Whichever topic I feel I can do, I could do justice to, or also would benefit the community, I would do it. And yeah, you get a ticket for suggesting it. शशांक सिंह कुछ सा FT गेम दिखाओ. एक खुशी से दिखाऊंगा अगर मैं FT पहुंच पाऊंगा तो. FT पहुंचा दे, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा. Sasad Biswas say you can continue with ranges. Entire life is left to chill, but very minute time for learning. It never ends. You are 100% right, but मुझे वही थोड़ा सा लगता है कि म्यूचुअल गुड होना चाहिए ना यार किसी स्ट्रीम में. तो मैं for me to impromptu do a study stream, everyone has to be on the same page. Like every one of you watching has to be on the same page. जब आप लोग सब स्ट्रीम के लिए आए हो, अभी आप लोग स्ट्रीम के लिए आए हो, सब लोग अलग अलग लेवल ऑफ पोकर पे हैं अभी, राइट. मैं भी एक मैं भी एक सर्टेन लेवल पे हूँ. आप लोग मेरे से ऊपर या नीचे किसी भी लेवल पे हो सकते हो. सो मैं आई डोंट वांट टू डू अ इम्प्रॉम्प्टू स्टडी स्ट्रीम बिकॉज
इट डजेंट रियली मेक सेंस इन माई ओपिनियन कि वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं है ये वाली, राइट? सो स्टडी स्ट्रीम्स हम जो मैं करना भी चाहता हूँ, आई विल मेक श्योर कि वेल इन एडवांस आई लेट पीपल नो कि इस लेवल का स्टडी स्ट्रीम होने वाला है. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी वेल वर्स विद टॉपिक्स लाइक दिस तो आपके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा. लाइक मैंने पहले भी जो स्टडी स्ट्रीम्स की थी उनके स्टार्ट में ही मैं बता देता था कि अगर आपको ये पता है तो आपके लिए यूज़फुल नहीं होने वाली, और अगर आपको ये में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपके लिए यूज़फुल नहीं होने वाली. दीज आर द टॉपिक्स दैट वी गोइंग टू कवर. तो अगर आपको इनमें से किसी में इंटरेस्ट है तभी आप ज्वाइन करो स्ट्रीम को. तो उस टाइप से ही मैं वो स्ट्रीम को कंटिन्यू भी करना चाहता हूँ. आई डोंट थिंक मैं ऐसे चिल प्ले स्ट्रीम को ऐसे कन्वर्ट करना चाहूँगा इनटू अ स्टडी स्ट्रीम. जेनिफर बोल रहा है मैक्सवेल इक्वेशंस वाह रॉकेट साइंस इज इजियर देन पोकर. इफ ओनली यूड डन aerospace engineering on my behalf, you would have known how tough or easy rocket science is. But ठीक है, कोई नहीं. सासुद बोल रहा है yes please discuss मैक्सवेल इक्वेशन, I am all ears, I will join as well. नहीं वो फिर आप ही को करना पड़ेगा. मैंने कह तो दिया, मुझे याद कुछ नहीं है मैक्सवेल इक्वेशन में. मैंने बस कहने के लिए कह दिया क्योंकि वही याद आया मुझे बोलते बोलते, बट मुझे बिल्कुल नहीं याद अब कुछ. 359 पे 4-6 we would like to, I mean let's see. Sorry. I think we check raise a lot on this board, and 4-6 is actually pretty decent to check raise. We even have a club, so I'll just check raise. We don't want to see a jam, it would suck. Thankfully not. अनुराग बोल रहा है आरएनजी स्टडी प्लीज. उसके लिए हमें और लोगों को लाना पड़ेगा ना स्ट्रीम पे. मैं और आप नहीं कर सकते आरएनजी स्टडी स्ट्रीम. अभिषेक गौतम, अरे आई डिडंट मीन फॉर दैट, आई वाज सेइंग फॉर सम, आई ऑलरेडी मेंशन कमेंट विद एन इमोजी. अरे यार नहीं आप तो सीरियस हो गए. मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ. मतलब और मैं आपके लिए, मतलब अभिषेक आपका बस मैंने नाम यूज़ करा. जेन्युइनली इट्स सबके लिए ही वैलिड है यार ये चीज़. We can 3-bet. I think we can jam also. I prefer jamming because 3-bet calling would suck with ace jack offsuit, but we can't really 3-bet fold. So I'm just gonna jam. Oof. No. Oof. Do we want to really re-enter? I don't think so. I mean, एक ही टूर्नामेंट है यार, इसके लिए क्या ही री-एंटर करेंगे अब, है ना. आई थिंक दिस वुड बी इट. आई थिंक दिस इज द लास्ट, दिस इज द एंड बेसिकली. आई डोंट रियली फील लाइक re-entering this now. Let me see if there is another good tournament coming up or happening right now. 2750 Saturday Spotlight, 40 bigs है. ठीक है, so I'll actually do this thing. I'll register the Saturday Spotlight. Let's see. It's a 12L GTD tournament. One second. Yep, let's change the name as well. Saturday Spotlight 12L. Cool, alright. साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसका, बहुत ही बड़ा हो गया नाम. ठीक है, कूल, ऑलराइट. अब देखते हैं क्या चल रहा है चैट में. हाँ अभिषेक, अरे मैं मतलब आई डिडंट रियली मीन कि आपने कुछ गलत या ऐसा बोल दिया यार. जेन्युइनली आई अंडरस्टैंड कि
आपको अनोइंग लग सकता है वो चीज़। अगर मैं हवा में आपको आके बस बोल रहा हूँ कि ये रेंज वो अनोइंग लग सकता है, किसी को भी लग सकता है वो। आपने बस बोल दिया था इसलिए मैंने आपका नाम यूज़ किया, वरना कोई भी हो सकता था वो स्ट्रीम पे। आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट द सेम। ऐसा कोई मुझे मतलब ऑफेंडेड नहीं था मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से। मुझे तो जेन्युइनली लाइक कि आपको अगर लगा इरिटेटिंग तो आपने आके बताया कि नहीं ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे सही लगा। एनीवे जेनिफर बोल रहे दिस रेंजेस वुड बी लॉन्ग बट वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, ओके। सेम बोल रहा है ICM डेफिनेटली ऑन FT एंड बबल प्ले। या ICM आई डेफिनेटली थिंक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड उसमें कॉमन ग्राउंड है वो चीज़, सब लोग फेस भी करते हैं आई थिंक काफ़ी सारे लेवल पे, एंड बहुत वैल्यूएबल टॉपिक भी है वो। सो ICM इज़ डेफिनेटली ऑन माई माइंड। सैमुअल बोल रहा है टॉपिक ऑन हाउ टू प्ले कॉमन पॉट्स लाइक पैड बोर्ड, वेट बोर्ड, सेट्स वर्सेस फ्लशेस, पॉकेट वर्सेस ओवर कार्ड्स ऑन फ्लॉप। अच्छा ओके ठीक है। सो बेसिकली आप इंस्टेड ऑफ, बट यार नहीं ये तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ना, मतलब कि कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हो आप। लाइक आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज बोर्ड्स व्हेन बिग ब्लाइंड डिफेंड वर्सेस अर्ली पोजीशन और लेट पोजीशन और मिडिल पोजीशन, और इफ in position guy calls versus an early position or a middle position or a late position RFI। तो मतलब ये बहुत ही specific to प्री फ्लॉप एक्शन वाली चीज़ है। तो ये भी अगेन इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक एंड आई थिंक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो या आई एम लुकिंग फॉर टॉपिक्स which don't require a lot of prerequisite knowledge and yet could be very useful for everyone. TLP, I would love to learn about positions and how to play and what cards to play at what position. ठीक है, so basically वही ranges वाली चीज़ कह रहे हो ना आप भी। Okay. That's what I would love it if you make a video on ICM and also changing of bet sizing from early, middle, late position and how it changes that game progressive. अच्छा, okay. I think I get your point. Now another thing is how to play small stacks like 15 BB. I'm baffled about ranges for small stakes. Okay. So yeah, this is actually a very interesting topic. I think we can do a stream on ranges specific to smaller stacks. So like 15-20 BBs के अंदर जब है हमारे पास stack, so like 10 BB भी आ जाएगा उसमें, 15 BB भी, 20 BB भी, ये वाली चीज़ हम कर सकते हैं। Oof, this is such a weird spot. EP opened and then Lucky Parry has min click 3-bet. But I think we still have to jam. I don't think there is much else we can do. We'll mark Tarosh. I know Tarosh. Okay. Yeah, I think we still jam. There isn't much else to do in this spot. Let's see. Oof, we get called UTG say snap. Let's see. Have we run into kings or aces again? If we have run into kings or aces again, I don't think I'm rebuying. Wow. We got called in 2 places. This can't be good. Definitely can't be good. Alright. I don't think I'm rebuying anywhere. Doesn't look like a day for us. So we'll let it pass. We'll let it go. एक बार देखते हैं कहीं कोई फाइनल टेबल वगैरह चल रही है क्या, so that maybe we can rail. Sadly, no final tables right now. Is there something for us to rail right now? I don't know. क्या rail करें?
लेजेंड्स डे 1 भी चल रहा है, किसी को रेल कर सकते हैं क्या हम? लेट्स सी इफ आई नो एनीवन फ्रॉम द लिस्ट. Anyone we can basically rail. Oof. Not really. So sadly, this is the last table. I don't think कुछ और है हमारे पास देखने के लिए. I'll just put on one of my favorite players' tables. Can't really have them on stream, but we can at least watch them play. So, yep, this is Sri Harsha's table. Let's just rail him for a bit, until we have the giveaways. And then we'll probably just close the stream for today. Sadly. मैं पढ़ता हूँ टॉपिक्स की जो बात चल रही थी. टीएल ने बोला लव अबाउट पोजीशन एंड हाउ टू प्ले एंड व्हाट कार्ड्स टू प्ले एट व्हाट पोजीशन. ठीक है. शाश्वत बोल रहे हैं आईसीएम एंड चेंजिंग ऑफ बेटिंग साइजेस. अच्छा, सो बेसिकली किस टाइप के बेट साइज कहाँ यूज़ करने होते हैं, और ऑल्सो आईसीएम. दैट इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. सौरभ ने बोला टूर्नामेंट में हर स्टैक साइज पर कैसे खेलना और रेंजेस क्या होनी चाहिए. ठीक है. अगेन रेंजेस. शाश्वत ने ऑल्सो रिक्वेस्ट प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्ले स्मॉल स्टैक्स. हाँ, वो हमने पढ़ लिया था. भरत ने बोला बीवीबी सिंगल रेज स्पॉट यूजिंग पायो. BVB, okay, BVB could be very, very interesting, but BVB also could be very vast, Bharat, right? So, and also it would require a lot of information about pre-flop ranges BVB ke, which is tricky, I think, at the level on which most people watching the stream are. So, I think वो थोड़ा सा advanced topic हो जाएगा. राहुल चपाटे से slow playing. One thing I can say about slow playing is that in most spots you can actually avoid slow playing, but yeah, I don't know, slow playing is not really a thing that I know of. I mean, in most spots, बहुत specific spots होते हैं जहाँ पे slow playing actually makes money, which is useful, but most spots में I think slow playing is not even a thing. Saturday tomorrow is going to be worse as time progresses. So many flip missed. Yeah, there are some days like that. It's fine. It's all right. We tried. That's all that matters, I think. Naveen ne bola general topic for vocabulary, ICM, ranges, bankroll management, study from where and what to start. Okay. Yeah, this I really like. We can talk about poker blueprints actually. It's so whenever I have taken up a bunch of students for coaching, and whenever I'm starting coaching with someone, the first thing that I expect them to do is to make like a poker blueprint. And a poker blueprint is basically your journey, how you envision your poker journey to go for the next few months or the next few years, or basically could go as long as you envision something. Basically, it depends on what your current goals with poker are. It could be to make a certain amount of money, and in which case it would not be a very long scheme. And if it's to become the best poker player, for example, then it could be a very long scheme. It's very dependent. So yeah, a poker blueprint is definitely something we can make a video on. Sure. Okay. Abhishek ne bola mindset. Achha. Mindset, honestly, I am not somebody who really excels at mindset stuff. I mean, I can only talk about my personal experiences in regards to mindset, but overall level पे मैं कोई expert नहीं हूँ, because मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है mindset से related ज़्यादा. मतलब मैंने of course कुछ कोर्सेज किए हैं, but all of those are very in like personal benefit के लिए कोर्सेज. मैंने कुछ सीखने के लिए कि mindset कैसे फिक्स करते हैं, as such कुछ नहीं पढ़ा है कभी, तो मैं I don't think अच्छा हूँ उस चीज़ के लिए. विचर बोल रहा है ICM नहीं, क्योंकि उससे पहले वहाँ तक सीखना भी तो पड़ेगा.
मुझे लगता है पर्सनली ICM के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बिकॉज ICM समझने में आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली रेंजेस क्या होती हैं और क्या स्पेसिफिक हैंड मुझे कहाँ से खेलने कहाँ से नहीं खेलने। ICM समझने के लिए आपको बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो चिप्स आपके पास एक टेबल में टूर्नामेंट पे होते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरीली एग्जैक्टली इक्वल टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट स्टैक। मॉनेटरी वैल्यू आपके स्टैक की बहुत अलग हो सकती है आपके चिप स्टैक से एक टूर्नामेंट के ड्यूरेशन में। दैट इज़ प्रीटी मच ऑल यू नीड टू नो फॉर ICM। तो या आई थिंक ICM में इतना प्री रिक्विजिट नहीं है कुछ। टेल बोल रहे हैं व्हेन टू ब्लफ कुड बी नाइस। अच्छा, सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि कुछ हॉट स्पॉट्स हम आइडेंटिफाई करें कि इन स्पॉट्स में लोग जनरली फोल्ड देते हैं। ओके, वी कैन डू दैट। प्रकाश बोल रहे हैं बड़ी मछली को तालाब से बाहर कैसे निकालें। अच्छा, आई मीन इट्स फनी, बट मैं जो समझ पा रहा हूँ इस बात का मतलब, आई थिंक आप ये कह रहे हो कि अगर आप टेबल पे एक फ़िश को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो उस फिश से मैक्सिमम वैल्यू कैसे लेनी है। एंड या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई थिंक यू कैन एक्चुअली डू दैट। अंजन ने बोले प्लीज मेक वीडियो ऑन how game playing changes from no limit hold'em to PLO and as well as bankroll management. I'm a bit of weak post flop playing and also making video on playing style especially after ITM to final table. अच्छा, तो बेसिकली आप बोल रहे हो मैन्यूवरिंग फ्रॉम मिडिल स्टेज टू लेट स्टेज टू फाइनल टेबल्स टू शिपिंग द टूर्नामेंट्स, कैसे मैन्यूवर करने हैं बेसिकली अलग अलग स्टेजेस में टूर्नामेंट को। ओके, फेयर, इंटरेस्टिंग। हाँ, मैंने बोले पोस्ट फ्लॉप बेटिंग स्ट्रैटेजी। हाँ ठीक है, तो बेसिकली किस किस टाइप की बेट्स यूज़ करते हैं और किन किन स्पॉट्स में उन बेट्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक, क्योंकि हम स्पेसिफिकली किस स्पॉट में क्या बेट साइज यूज़ कर रहे हैं वो बात नहीं करना चाहते, बट वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट कि किस टाइप के हैंड्स के साथ हम किस टाइप की बैटिंग को यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पोलराइज्ड अगर हमारी रेंज है तो हम किस टाइप की बेट साइज यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम एक पोलराइज रेंज को अटैक कर रहे हैं तो हम किस टाइप की साइजिंग यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम एक कैप्ड रेंज को अटैक करना चाहते हैं तो हम किस टाइप की साइजिंग यूज़ करना चाहते हैं। इस टाइप की बात हम कर सकते हैं, बट पता नहीं शायद थोड़ा एडवांस हो या नहीं हो, एक बार मुझे वो सोचना पड़ेगा। मैं वो डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं, बेसिकली वो मुझे सोचना पड़ेगा ऑनेस्टली। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग कि कोई टॉपिक एडवांस्ड या बहुत ऐसा नहीं होता। जो डिलीवर कर रहा है जो इंसान, वो उसको ढंग से जस्टिस कर पाएगा या नहीं वो भी मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे वो भी एक बार सोचना पड़ेगा। अंजन ने एक और चीज़ बोली है, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू मेक नोट्स प्रिसाइसली एंड व्हाट पॉइंट्स नीड टू। ठीक है, तो बेसिकली नोट टेकिंग पे आप कह रहे हो एक वीडियो बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। नोट टेकिंग इज़ अ वेरी important part of the game and we can probably do some study on that as well. अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। नवीन ने बोला कूलर ही कूलर था आज। हाँ ठीक है, ऐसी कुछ दिन होते हैं। इतने दिन से स्ट्रीम रन गुड चल रहा था हमारे साथ, कभी तो हो नहीं था, चलेगा। जेनिफर ने बोला व्हाई डोंट यू कॉल इट टुडे एंड कम अगेन टुमारो। थैंक्स मॉम। And honestly, yeah, that's what we've done. I'm not playing anymore. Socially Viral says T2 Tauji is my favorite. Oh, I mean, that's definitely a very good choice. T2 Tauji is one of the best players in the field. Bharat says topic how to effectively use solvers. हाँ, that is very up my alley honestly. मेरा personal like if I had to pick a topic to talk about to discuss with you guys, it would definitely be related to using solvers. Effectively तो थोड़ा सा डेप्थ में चले गए हम लोग, but in general just about how useful solvers can be for your poker study routine or for your poker journey is something that is very close to my heart and something I always talk about with people I talk to regarding poker or coach or whatever.
सोशल बोले भाई मैं तो बोलता हूँ डांस पे वीडियो बना दो 2-3 बस मज़ा आ जाएगा। आई विश मैं इतना अच्छा होता कि डांस वीडियोस ही बना लेता, फिर मैं पोकर खेलता ही नहीं। ठीक है ठीक है, सही है। चलो ऐसा करते हैं, मैं 1-2 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ, फिर हम फाइनल गिव अवेज क्लोज करते हैं और स्ट्रीम भी क्लोज ही करते हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। तो एक बार एड्स देख लो। आई बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स। एक पल का जीतना फिर तो है हारना, स्टैक क्या ही बनाइए अल्टीमेटली बांटना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस 2-4 घंटे टाइम पास हो जाएंगे। रिवाय लेके प्राइस पूल को है बढ़ाना, ऐ मेरा बैंक रोल उड़ाए जा, तू लेके जा डायमंड के साथ क्राउन में सोने भी चाहिए। मीडिया में उसकी आईडी वायरल की जाए, मीडिया में उसकी आईडी वायरल की जाए। ओ IOPC बोल दे तेरे मैनेजमेंट को, ओ IOPC बोल दे तेरे मैनेजमेंट को, मेरा यार खेल रहा है गारंटी बढ़ाई जाए, यार खेल रहा है गारंटी बढ़ाई जाए। करोड़ की गारंटी है IOPC के लिए। 20 चांस से स्टार्ट किया तो लीडर बोर्ड टॉप करे। क्रूशल पॉइंट पे आ गया तो टफ कॉल किया है गंदा। शोडाउन का टाइम हुआ तो क्या दिखाएगा ये बंदा। नट्स बोलेगा या ब्लफ बोलेगा सारा, बोलेगा या जीजी बोलेगा साला। एक पल का जीतना फिर तो है हारना, स्टैक क्या ही बनाइए अल्टीमेटली बांटना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस 2-4 घंटे टाइम पास हो जाएंगे। रिवाय लेके प्राइस पूल को। वेलकम बैक, व्हाट इज अप। आगे पढ़ लेते हैं एक बार क्या बातें चल रही है। माइंड रिलैक्सिंग में भाई मैं MPL पे खेल रहा था, 30 विनर है, आपने टिकट दिया था, शायद कुछ मिल जाएगा। अरे क्या बात है क्या बात है, गुड लक, आई होप यू एंड अप शिपिंग इट। इलाके ने बोला है प्लीज मेक वीडियो ऑन कैश गेम, ऑल्सो हाउ बेटिंग रेंज चेंजेस फ्रॉम 8 to 6 और हेड्स अप, ऑल्सो बैंक है what is the right time to increase stakes in cash game. अच्छा, I'll definitely talk about it with the team, but actually मैं कैश गेम खेलता नहीं, मुझे कैश गेम इतना अच्छा आता नहीं। तो अच्छा क्या मैं कभी कैश गेम ग्राइंड किया ही नहीं, सो आई डोंट थिंक मैं कुछ ज़्यादा यूजफुल होऊंगा उस चीज़ में। तो या बोल रहे हैं हाँ बिगिनिंग में ITM ही ले लो, बेस्ट है, स्पेशली टॉप 2-15 पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
ICM sound like fun. प्रकाश पंडित बोल रहे इसका फुल वीडियो बनाओ, हाउ टू ग्राइंडिंग जीरो टू ब्रांडिंग. बेसिकली आप कह रहे हो कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट पोकर प्लेयर्स इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, वैसा टाइप का कुछ कह रहे हो आप शायद. हाँ, ये वही पोकर ब्लूप्रिंट वाली चीज़ है. आई थिंक पोकर ब्लूप्रिंट पे हम वीडियो बना सकते हैं फॉर श्योर. सो अभी तक जो मुझे टॉप 2-3 टॉपिक सबसे ज़्यादा हिट किए हैं वो है, पहला तो ICM बबल पे या फिर फाइनल टेबल का ICM, ओवरऑल जस्ट ICM एज अ कॉन्सेप्ट. दूसरी चीज़ है यूजिंग सॉल्वर्स, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक सॉल्वर्स लाइक HRC, ICMizer, Flopzilla to advanced solvers like PioSolver, Monker Solver and stuff. तो ओके, ये दूसरी चीज़ हो गई. तीसरी जो चीज़ मुझे अभी मिली थी वो क्या थी? पोकर ब्लूप्रिंट. ओके, पोकर ब्लूप्रिंट एंड देन ऑफ कोर्स रेंजेस का जो टॉपिक था. ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिली मुझे अभी तक. और सिद्धांत का है व्हाट शुड बी आवर रेंज, हाउ टू कैलकुलेट विलेंस रेंज इन पॉट ऑर्डर एक्सेट्रा. अच्छा, तो बेसिकली बेसिक पोकर मैथ्स एंड बेसिक रेंजेस. फेयर. बेसिक पोकर मैथ्स भी एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई थिंक आई रियली लाइक दैट. ओके, ठीक है. सो आई मीन आई गेट द कॉमन कंसेंसस. आई ऑल्सो गेट जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगा. तो मुझे पर्सनली जो अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो उसको मैं टिकट देना चाहूँगा. एंड वो पोकर ब्लूप्रिंट वाला जो टॉपिक था वो, क्योंकि मुझे लाइक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी मच इनटू पोकर ब्लूप्रिंट्स एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट. सो आई एम ट्राइंग टू गो बैक एंड सीइंग किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था. कूल. सो नवीन कुमार ने सबसे पहले सजेस्ट किया था टॉपिक. सो आई थिंक नवीन को मैं ये वाली टिकट देना चाहता हूँ. सो कंग्रेट्स नवीन. ठीक है. सो आई विल ऑल्सो क्लोज दिस पर्टिकुलर गिव अवे सेम वे. ठीक है, काफ़ी सीरियस हो गई ना वैसे आज की स्ट्रीम, बट ज़्यादा फन कुछ था नहीं. हमारे पत्ते वत्ते भी नहीं लगे तो मज़े तो इतने आए नहीं, फनी में रह गए. बट चलो कोई बात नहीं, नवीन को ये वाली टिकट देते हैं. और अब क्या करें, थोड़ा फन करके जाए क्या एंड में, आखिरी 5-10 मिनट क्या करें. गिव अवे में ही कुछ फन कर सकते हैं यार हम, और तो कुछ है नहीं हमारे पास. 2 और टिकट्स गिव अवे करनी है हमें. कुछ फन क्या कर सकते हैं हम. कैन वी प्ले सम गेम. लेट्स सी. एक बार मैं देख लूँ और क्या बोला है, कुछ और यूजफुल है क्या. इलाके ने बोला लाइक 30 स्पीड एंड आई एम 25th एंड 45 लेफ्ट. आई हैव 20 BB प्लेइंग स्टाइल. ओके. वही ICM वाली चीज़ ही हो गई है थोड़ी सी, कि ICM को बेसिकली ICM फ्रॉम, हाँ ICM को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी basics and we'll run it up to the final table कि ICM कैसे कैसे बढ़ता और कम होता जाता है with different stages of the tournament. So yeah, वो हम करेंगे. I think ICM पे मैं एक वीडियो ज़रूर करूँगा अब, क्योंकि मुझे भी काफ़ी यूज़फुल टॉपिक लगा था इनिशियली जब मैंने वो पढ़ा था, और अभी भी मुझे काफ़ी मज़ा आता है ICM के बारे में पढ़ाई करने में. कंचन शर्मा से हेलो, गुड लक. सोशली बोल रहे हो GL नहीं GG हो गया यहाँ, लेट हो गया आज आप. सही बात है यार. इवन हर्षा ऑल्सो बस्टेड विद जैक्स सैडली. कोई नहीं. सही बोल रहे भाई. स्टार्टिंग में फ्लॉपजिला या फिर हार्ड ड्राइव की इफेक्टिव यूज़ कैसे करके बेस्ट डिसीजन ले. हाँ. तो वही वो 4 टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं जिन पे मैं करूँगा. And meanwhile Naveen is the giveaway winner, so I'll just post.
ऑलराइट। एमपीसी ने बीच में बोला है वी आर प्लानिंग फॉर अ कैश गेम स्ट्रीम, यू विल लर्न हाउ टू प्ले लो स्टेक्स एनालिस्ट गेम। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। आई थिंक देन वी स्टार्टिंग विद अ series on cash games as well. So yeah, if you just stick around, you'll probably learn a lot about cash games as well. Anjan will also request you make videos on GTA versus exploitative play in comparison, which is better and how. I mean, वो तो बहुत ही it's a very thin line. Better तो कुछ नहीं है यार उसमें से. GTO कुछ है ही नहीं. Like on its own, GTO doesn't really mean anything. गेम थ्योरी ऑप्टिमल को अगर हम एक्चुअली सोचें, इफ़ वी नो गेम थ्योरी वेल इनफ, तो व्हाट गेम थ्योरी ऑप्टिमल बेसिकली मीन्स इज कि नोइंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल गेम थ्योरेटिकली क्या सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का. एंड सो GTO इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव इज बेसिकली GTO. इट्स सच अ मिथ दैट इज क्रिएटेड अराउंड GTO, क्योंकि गेम थ्योरी ऑप्टिमल कोई भी चीज़ हो सकती है यार. मतलब सारा एक्सप्लॉइट गेम थ्योरी ऑप्टिमल हो सकता है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन GTO एंड एक्सप्लॉइट. एंड स्ट्रैटेजीज़ को गुड और बैड में हम क्वालिफाई कर सकते हैं. GTO नॉन GTO में इतना कोई ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि फॉर समथिंग टू बी GTO, अगर हम एक गेम डिफाइन कर रहे हैं उसमें दोनों पार्टीज GTO होनी पड़ेंगी. फॉर लाइक एक पार्टी GTO होगी तभी दूसरी पार्टी के GTO होने का कोई मतलब होगा इन दैट गेम. सो बहुत ही थिन लाइन है ये GTO एक्सप्लॉयटेटिव की बात करने का. मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता इस चीज़ में. सो या कंचन बोल रहे आज मेरा हाफ BR शिप हो रहा है. भरत बोल रहे हैं डमशराज खेलते हैं. आप स्ट्रीम पे आना चाहोगे क्या? अगर आप स्ट्रीम पे आना चाहोगे तो हम श्योर खेल सकते हैं. आई डोंट माइंड एट ऑल. I'm actually trying to look for a game that we can play, but कुछ मिल सा नहीं रहा यार. ऐसे तो नहीं चलेगा. सो प्रकाश पंडित से गुड नाइट भाई साहब. गुड नाइट भाई प्रकाश. आजी चौहान से इस खामोश. भरत ने बोला बात करो, जो सबसे पहले गेस किया उसको टिकट, मज़ा आ जाएगा. चलो मैं ऐसा कर सकता हूँ फिर. कर सकते हैं हम ऐसा कुछ. मैं एक दो मूवी डायलॉग्स स्ट्रीम पे फ्लैश करता हूँ. आपको बताना है कौन सी मूवी का डायलॉग है, एंड द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी कौन सी मूवी का डायलॉग है विल विन अ टिकट. ठीक है, चलो फिर यही कर लेते हैं. अच्छा लग रहा है मुझे. दो मिनट दो फिर मुझे, यही कर लेते हैं आज. सही तो लग रहा है. तो एक टिकट या दोनों टिकट इसी पे करते हैं ना. कूल कूल कूल. गिव मी अ मिनट.
All right, so the first question is coming up on your screen. Mm-mm-mm-mm-mm. दो मिनट यार, ये इतना इजी नहीं है जितना लग रहा था पोस्ट करना. 2 मिनट तो. All right. All right. So this is your first question. You have to tell me what movie this dialogue is from, and the first person to guess it. First one to get it wins the ticket. नवीन बोल रहा है कुछ बेकार सा डायलॉग सोचना, फेमस वाला नहीं. यार ये तो थोड़ा टफ है. मुझे एक्चुअली पता है एक जो मुझे देना है. इट्स नॉट अ मूवी, बट इफ एनीवन कैन गेस इट आई विल गिव अ टिकट फॉर दैट वन. Out. $200. What the f? 8.25. He hit my toe. Me, he can. Balls is one of the craziest degenerates ever to play the game of poker. Gone from busto to robusto and back more times than we can count. Done more to redistribute wealth around the globe than Isildur won. Sacre. Balls. Good. Rose. Yeah, spent a month. 80s? Is that the world knows balls is crazy. The world knows balls is dangerous. What the world doesn't know is that balls
morning, ladies. Is a girl. All right. So I know the first one was pretty easy and most of you would get it. So the first one to actually get it gets it. But this one is tricky, I think. This one, if you get my respect. And yeah. Let's see if you can get it. Uh, 120 पे दिख जाएगा I think. Yes, alright. So मैं पहले एक बार देख लेता हूँ फर्स्ट वाले का आंसर आ गया होगा अब तक तो आई एम प्रीटी श्योर. क्या बोल रहे हो? कुछ बेकार था, फेमस नहीं, मोस्ट एक्टिव वाले को देना था आपको. फेमस मैं झुका नहीं साला. Okay, Jennifer, of course, Jennifer wins the ticket to this one. Meanwhile, yep, this is your next question. Let's see if any one of you can get this. मैंने शायद स्ट्रीम पे सुना दिया डायलॉग, बट आई डोंट थिंक कुछ फ़र्क पड़ता है उस बात से. बताओ अगर ये पता है. ओ बाय द वे सोशली वायरल भाई, अगर आपने राउंडर्स नहीं देखी तो यार देख लो यार. राउंडर्स तो बढ़िया मूवी है. अजय भाई इतना बिटरनेस कहाँ से ला रहे हो अजय भाई? क्यों इतने बिटर? भरत बोल रहे पोकर भी इंडिया का फाइट नहीं है भाई, मत खेल. चलो बस ये लास्ट गिव अवे है, ये करके स्ट्रीम बंद करते हैं अपन, फिर चलेंगे. अच्छा आप इतने बेटर नहीं था, मुझे ऐसे ही लगा, सॉरी. Anyway, it could be coming up anytime soon. मैं ये 3 मिनट के चक्कर में स्ट्रीम ही देखते रह जाता हूँ यार, कब आएगा कब नहीं आएगा. Let's see.
Socially viral. His girls with balls. Tail says Molly's game. Abhishek Gautam says 7. Nope, nope, nope. It's a series. It's a TV series. It's not a movie. It's not a movie. आई थिंक इसको गूगल करने पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें आंसर. सो लेट्स सी इफ यू कैन गेट इट. What? Are you guys serious? Nobody knows this. Damn. Damn. I am disappointed, guys. I was expecting at least somebody to get it. Oof. चलो. कोई बात नहीं. मैं बता देता हूँ. Let's move on from this. Cause प्रेम पूछ रहा है किसके रेटो के बारे में बात हो रही है यार. ये I am disappointed, not gonna lie. चलो. तुम बोल रहे थे टफ दिया तो तुम बता नहीं पा रहे. अब बताओ क्या करूं. चलो खैर. Let's skip this one. टेबल्स मैंने बंदी कर दी सारी. चलो कोई नहीं. एक और डायलॉग देख लेता है. मुझे लगा था कोई तो बता ही देगा यार. मैंने तो और देखा भी नहीं था कोई. चलो यार अब मुझे फिर ये बता दो यार. बाकी सब चीज़ें तो ईजिली गूगलेबल होती हैं तो मुझे इतना इंसेंटिव नहीं लगता इन्हें पूछने में. बट चलो क्या ही कर सकते हैं. दूसरा ये वाला चेंज कर देता हूँ. एंड दिस टाइम इट्स नीदर अ मूवी कोड नॉर अ वेब सीरीज. इट्स समथिंग समवन सेड. Let's see if you get this one. I'm pretty sure somebody will get it. मुझे अब बताओ ये किसने बोला. Who said this? Nobody has actually gotten the answer right. मैं बता देता हूँ. चलो मैं बता देता हूँ वो वाला भी. So properties. It's a pretty fun web series. It's called The Micros. Check it out if you haven't.
Yep. The micros. It's my all-time favorite web series based on poker. फटाफट मुझे ये बताओ, ये वाला कोड किसने बोला था? जस्ट प्ले एवरी हैंड, यू कांट मिस देम ऑल, एंड या देन वी जस्ट क्लोज द स्ट्रीम. मैं बस 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, देन आई जस्ट क्लोज द स्ट्रीम. आई डोंट हैव मच टू से और डू राइट नाउ. चलो अपडेट कर लेता हूँ मैं अपने स्ट्रीम के, तब तक तुम लोग आंसर करो जब तक. Where am I going? हाँ. All right. All right, we have the answer, so I'll just stop the stream at this point. Rishabh Rawat says your ball statement has offended me because I'm offended. The micro is on YouTube. कनेक्शन मैसेज हमें नहीं खेलना है ऐसे. अच्छी बात है, आपको खेलना भी नहीं चाहिए, आप खेलो ही मत. नितिन बोल रहा है जस्ट हैड अ ब्रेकअप, फीलिंग लो. नितिन, आई एम सॉरी नितिन. Jennifer can help. All right, I'll just close the stream. Thanks a lot for tuning in.